Rashid Khan, Rajat, he's in tonight. Rabat, the purple cap holder. Can he have a big say in this outcome? Mohammed, Siraj. And you would expect, with the way that Gujarat have structured up, Prasid Krishna will come in. It's a well-oiled machine. Balance their strength. They bat deep, and there are lots of attacking options in the bowling department. Technically, one change has been Ayer. He's on the bench. Romario Shepherd is in, but we will probably see that swap as they will use the impact player most probably in that second innings. We'll see how the game unfolds. But it's all about bowling first tonight, and they'll look to get breakthroughs early on. Razik Salam, Jacob Duffy, Joss Hazelwood, Kumar, the man in form, Romario Shepherd, and spinner Krunal Pandya. The stars sprinkled on either side. They play their cricket differently. One team hits more sixes, scores hard in the power play, scores more runs than the other. The other team just takes more wickets than anybody else. It's some contest, and hopefully the pitch will make it equally good for both of them. Out they come. Some people have been here before. They know what it is. They've been in big finals, like the two gentlemen sitting next to me. They will tell everybody, treat it as another game. Is it possible at all? Butterflies just sitting here, Asha. It's unbelievable walking out there on the outfield earlier with the toss, with the coin toss. It was the loudest roar I've ever heard, I think, in my entire life. RCB won the toss, obviously, and the crowd was pleased with that, or at least the RCB fans who were in here. Thousands and thousands hoping for their team to claim a stake with this year's final. I'm just surprised you're in blue today. They arrive, we're all set now. Everyone will stand for the national anthem before the big evening. And so to the action. The Gujarat Titans will bowl. They've got a magnificent bowling lineup. Every one of them has got more than 15 wickets. In the top 15, there are 5 GT bowlers. RCB, on the other hand, out in the field. 2 among the top 15. The fearless Bhuvi and the vastly impressive Rashid Salamda. Does it make a difference, batting or bowling first? Both of you have been here before. Both teams will be confident. We heard Shubman Gill at the toss talk, saying that he was comfortable to bat first. He would have, if he had the opportunity to. Probably just go to the mindset of both teams. One is so reliant on their top 3, so they feel as though the best way is to get out there and set a total and play almost with a lot more freedom. Give me about 45 minutes and I'll tell you, Asha. Right, out come the umpires. Very experienced. Nitin Menon goes around the world. He's a highly rated umpire. K. Ananthapadmanabhan, such an accomplished leg spinner for Kerala all those years ago. Third umpire today is J.R. Madanagopal. Match referee today, Javagal Srinath. Remember, today it's unlikely, but you can make up 2 hours today in case of stoppages, and you've got to have 10 overs on either side to make a game. Shubman Gill
Sai Sudarshan. This year, 15 times they batted together. They made 886 runs batting together. Strike at 177. That's a good 10 or 12 up from where they normally were. Conventional opening pair, but they've done incredibly well. And everyone's talking about GT's weakness being their batting, but the only reason for that is because they've got an incredibly strong top three. So it's not really a weakness. Shubman Gill, Sai Sudarshan, right-left-hand combination poses a lot of problems to bowlers. Difficult to find the perfect areas up front. But it's a crucial part of the game here tonight, as RCB would love to get a breakthrough early on. Now here's something interesting. The ball's been thrown to Jacob Duffy. I'm quite surprised by that. We've seen Bhuvneshwar be so effective in the first over. चलिए अगर तमन्ना ना पूरी हुई हो आज तो एक और लीजिए. There's a slip in place. Try and find that nick early. Just wonder if he likes the new ball. He took the new ball in the qualifier too. It's interesting. At the option, they waited and they waited for Duffy as a backup to Hazelwood. Now he's got the new ball ahead of him. Here's the countdown to the finale. Here we go. First ball, IPL 2026 final. Good first ball. Just a little bit of swing. Yeah, it's a hint of swing there. And I like the fuller length to Sai Sudarshan. We know how damaging he can be square of the wicket, both off and leg side. But don't mind this. Pitches it up. A hint more swing, and that's thumping into the front pad. Get that length and nice and full. Challenge Sudarshan to hit the ball down the ground. One ground where the quicks have done better than the spinners, even on economy rates. It's not always. But you see that again, a little bit of swing. He's got to be careful. The length is good. It's still ideal to find the top of the stumps. I would still pull back a little bit. I like the fuller end, don't get me wrong. Just a touch back, as some of the best bowlers in the world, they always talk about finding the top of the stumps. And the sooner RCB can find that perfect length, the better. They'll be communicating during his first few balls. Duffy and the mid-off will be talking to each other. Should I pull it back a touch? Just 1 foot maybe. Plays fine. That's the first boundary. The first of many you would imagine on this surface. And the Gujarat Titans are up and running. It's a left-hander's dream first up. Just sliding down the leg side. Good top order players, they're never missing that. Let's get that first boundary. Just settle the nerves for Sai Sudarshan as well. Every player, no matter how many times you've been around the block, they feel nerves. There'll be tension, there'll be expectation. Now to the offside. We were talking about whether the length was too full. And he'll be breathing a lot better, Sai Sudarshan. That's the problem with that length. The minute it doesn't swing, it creates a bit of width. And Sai Sudarshan can just hit through the line. This time around, holding on to his bat. Finding the middle of that bat, that's for sure. And an absolutely glorious shot as they move to 8. Like how you subtly said holding on to his bat. Now there was a little sound as it passed. The finger's gone up. This is an early wicket already. He has reviewed immediately. He has reviewed immediately. There's a sound as it passed. We have a clear review for a caught behind. Original decision is out. I checked the feet, it's a fair delivery. Front on, please. Ball is passing close to the bat and the glove. You have anything from behind for me?
a big moment. Such a big moment in this match. Okay, copy. You can give me ultra edge to confirm, please. It's a flat line as the ball passes the bat. Satisfied, no bat involved. And ball is also clearly passing down the legs. Nitin, not out and signal wide, please. Thank you. Relief in the GT camp. Even the big man is relieved. Well, I've just seen all the emotions in a couple of minutes there, the excitement. You know how big this first wicket is. And have that overturned. So Sudarshan will be breathing a sigh of relief. He was quick to go for the review though. Haydos still umpiring from the dugout. That'll be wide. Now what's interesting is when he was playing in the test matches, they set a trap for him. He was out twice, caught a leg slip in the test matches. But this time it's not a great trap because there is no fielder there and it'll be wide. I was going to say exactly that, Asha. There's no leg gully or leg slip. There's not even a fine leg. You don't really call that a fine leg. That is like a deep square leg kind of fielder that's out there. So no real protection on the leg side when it comes to fine leg area. He's got to find his straps here, Duffy. He's taken the first run quickly. That's all there will be. We've seen the ball shake back in a couple of times. And here's Duffy. This one just slides down leg, but he's tried to go the other way to Sudarshan. He's tried to push it across the left-hander. He's showing his full bag of tricks here. Just haven't seen as much swing after the initial couple of deliveries. Talk about big moments. Shubman Gill, the form that he's been in has been wonderful. Coming off a brilliant 100. Wide again. He looks so calm. The only time I've seen him lose shape was when they were chasing 250 in the first qualifier. And he played a shot that you don't see with Shubman. He attempted a slog. So that's where they are. Washington Sundar, Nishant Sindhu, Rahul Tewatia, Jason Holder. What a role he's played. Not scored a lot of runs, but he's capable of. Rashid Khan can swing his bat, so can Rashid. But so much depends on the top three. 12 of the first over. 13, in fact. 13 for no loss. Loudest noise that AB said came when RCB won the toss. Yet, when the decision went in favor of GT, there were a few flags going and a bit of noise there too. Right, here's Bhuvneshwar Kumar. 26 wickets, economy 8. Just has the ball on a string, astonishing longevity. And have a look at the numbers at the bottom of your screen there. That's why he's been such a wonderful bowler for a long time. He's got the ability to swing it. That's on purpose, that wobble seam delivery there. Just trying to find something that can either nip back off the seam. He gets the seam up right. He'd love to bring it back into Shubman Gill. Try and find that gap between bat and pad. Oh, beauty. And this one goes the other way. He's scarcely bowled a bad ball this season. Just subtle changes. And Pinchy was talking about that first ball that had a bit of a wobble seam. Look at this one now. Perfect seam up for that away shape. Almost setting up Gill in 2 deliveries. Deciding to go scramble seam, which doesn't do much the first ball. And that next one bringing his slip and his wicket keeper into play. What an incredible bowler.
what's coming next. At his turn here, at his mark where he turns, that's where he'll decide what game plan he's following. Brilliant. There's class on both sides. From the hand that delivers and the bat that strikes. And then sometimes class replies. Shubman Gill. He's away with his first boundary. In typical Shubman Gill fashion, the way he's been batting the last few games. He's led from the front for the GT team. We know how important the top three is. He almost advanced there a little bit. Telling Bhuvi, you're not as quick anymore, Bhuvi. We might have got 26 wickets, Shubi. Twice he's got the purple cap. And you thought in those glory years of 2016 and 2017, would he ever become that bowler again? And he has. Here's the options for GT. You would assume that it would be Prasid Krishna unless they see something in this surface in the first half. Say spin would be the option. Well, down again. Yeah, I don't mind that game plan actually. It takes that swing from Bhuvi. Bhuvi's big skill is nibbling it around, moving it away from the batter, taking it in, moving it off the seam. He's got all the skills in the book, but once you advance, it sort of takes LBW and bowled out of play. Takes a big part of his dismissals out of the game. Which that's where you would say the Shubman Gill has the most trouble, when the ball nips back or when it swings back. Because he's looked to be so much more dominant down the ground this season, that does create a gap between bat and pad. And goes past the outside edge, probing, asking questions. 5 of the over, 18 for no loss. Perfect length. That's a lead, that's a half lead. Kohli's up for the fight, he's pumped. He always is, provides so much energy. One over from Duffy. And I said, now we'll get a big gun back. So Josh Hazlewood comes back. Very similar field though. Hazlewood will be more metronomic. You know where he'll bowl. Wow! The first salvo fired against the big Hazlewood. And it's Gill who's down the wicket. That's brilliant proactive batting. Saying we're not just here to compete tonight, we're here to try and dominate you from the start. I don't care about your reputation. Josh Hazlewood, your predictability can play against you at some point. So I'm going to come down the track, I'm going to look to dominate from the outset. I'm going to look to send a message to the rest of my team. Straight up, straight up. Straight up, catch taken. Colossal moment in this game. It is Shubman Gill who owns a little patch of turf here at the Narendra Modi Stadium. Loves playing here, but he's on his way back. And Hazlewood has delivered the big blow early on. Huge moment in the game as RCB throws a big punch, a big blow. It is the captain that's been in form. Josh Hazlewood, the ever-present, posing problems to all batters that he bowls to. And Gill, like he's done a lot last season, going across the line and unfortunately finding that top edge. The captain of RCB, Rajat Patidar, making no mistake in this big moment. Gill's got to go for 10 and it's 22 for 1.
How many of you sitting at home would have believed this? There's an early wicket. It's not one of the great white ball players of all time, Joss Butler, but Nishant Sindhu has come in at number 3. Started off his career as a left-arm spinner who batted and has gone up and up and up the order. But it's such a big ask, this young man. 2 slips. He'll have a hurry, but he'll get there. What a big moment this is. Why Nishant Sindhu, gentlemen? It is a big moment, and it's not on anybody's bingo card. I wouldn't have expected. Just 134 strike rate, 43 runs in his IPL career. I suspect what it is if the Gujarat Titans look at their list, you see it's just rushed Shubman Gill for pace. Patidar had to make some yards. Jacob Duffy didn't want a part of that. He said, over to you, skipper, you take the catch. But it's a way of extending your batting lineup effectively. You say, you know what, we understand that the biggest threat from the opposition is Hazlewood and Bhuvneshwar Kumar. Another one that came big on him. All the more reason Hazlewood pulled the first over. Just slightly too early on it, Sudarshan. He's been in great nick as well. It hasn't, sorry. Skidded off the surface. There was a couple of patches on there, had some bare grass, and what you often see in that area is the ball hits the shiny side and skids through and hurries you for pace. Kohli, Padikkal, Patidar, Krunal can bear anywhere. There will be Venkatesh Iyer and Shaw coming in. Jitesh, David, Shepherd. Bhuvi, remember the 6? All the way down. And the chase master up at the top. One of the prime reasons you're wary of defending any score that against a team that's got Virat in it. What an over. First blow from Gill, a bigger one from Hazlewood. It's 24 for 1. Bhuvi again. First over, only 5. Still a conversation between Finch and de Villiers about that move. Should be looking at 2 here. Why did they look for 3? Surely 3 was on. I just think they thought it was 2 from the beginning, so they've reconciled to 2. Well, there are lots of theories about what your top 3 should be doing, where they should be batting. Josh Butler in form. Are you worried about a good delivery from Hazlewood up front maybe, and don't want to risk him too early, push him a bit back? I can relate because I was in that position a lot throughout my career. So there are 2 sides of the story, and they've decided to go with that tonight. Push Butler back, make the batting lineup seem a bit deeper. Is that a defensive move, though? That cosmetic, is that real? It's defensive, and I don't like it. Is that clear enough? You could not be clearer. Venkatesh Iyer will come out to bat. You'd imagine. He's done so well. He's got a very good record in playoffs. In KKR won, he got 50 of 25 balls or something in the final. 5 matches, 177 runs.
striking at 170, 180 thereabouts. Bounce it with the over. Everybody's here to watch this game, isn't it? It's fans, spectators. Jay Shah's come down as well. Roger Binny, till recently president of the BCCI, World Cup winner himself. Leading wicket taker the year that India won the World Cup back in '83. Straight up, keeper is running for it. It's a little distant, but he'll get there. What a start for RCB, the defending champions. Wow, have they sewn up this game so early? First Shubman Gill, then Sai Sudarshan, 700 runs apiece, both of them in the dugout. You need to land some blows early, and that's exactly what RCB have done. Bounce of the ball before, so Sudarshan says, all right, you have to go full. I'm coming at you. It's not. It's a well-directed short ball. It's Bhuvneshwar Kumar using all of his experience, all of his skill. The man in form, Sai Sudarshan, he has to go for 12. GT are rocked early, 26 for 2. They're two big guns for the new ball. Hazelwood's taken one. Bhuvneshwar Kumar now has 27 wickets. He wobbles the ball around, nibbles it here and there, and gets a wicket with a bouncer. Very well directed bouncer over the left-hander's left shoulder. And so it's Butler. AB didn't like it. Well, he's here. He's here, but after another body blow. You've got to believe from now on, from here onwards, it's Butler against RCB for them to make a match of it. There's a lot of batting to come, but he's the kingpin. Bhuvneshwar, 1 for 7. They're everywhere, striking at the non-strikers end. Where was Nishan Sindhu? It's a red army out there at the moment. They're everywhere. They're sensing a bit of weakness in the opposition. Butler hoping to get off strike there. Get off the mark, but not on this occasion. There's definitely a bit of extra pressure because of where he's batting now. Now all of a sudden 2 down. The run rate's not looking good. You don't want to be unnecessarily putting your best players under pressure. And he played fine enough to get off for a boundary. 30 for 2 after 4 overs, the Gujarat Titans. A little bit straight there from Bhuvi this time around. Butler gets a much needed boundary for GT. So 30 for 2. Trying to rebuild here for
the Gujarat Titans. They've been rocked early, both their openers, in-form players, over 700 runs. Both dismissed. The middle order hasn't really been tested, but here's the opportunity. The likes of Washington, Kevatia, Butler, Holder to step up. In the air, but hit hard. It's the first boundary for Sindhu. He's just got a little bit of room outside the off stump for Sindhu. Flashed hard at it. That's the important thing. Flash hard, you can hit the ball very hard, powerfully, also over the infield. That's gone through. That's a rare misfield. He's normally so good, Bhuvneshwar Kumar. Consecutive boundaries. Yes, that ball came at him pretty quickly. Good pace generated. Again, a little bit outside the off stump, opening the face of the bat. Nishant Sindhu. Bhuvneshwar Kumar just hold an over. Got a very good wicket, very important wicket. Concentration sometimes it would not be 100%. This time there is a man covering it, a third man. 9 of the overs so far. What do you make of this surface push? It's offered some bounce. And the line of that short ball, the moving of the wicketkeeper was excellent. So we're seeing the short ball use some length deliveries and hitting the splice of the bat. Bhuvneshwar's used it well. The Google AI search, the question is on Hazelwood. What makes Hazelwood a wildly powerful power play factor for RCB? Is it his effectiveness that stems from unyielding accuracy, strategic tactical sequencing, the hard length consistency? No more by asking another question in AI mode in Google search. A short ball to end the over. After 5, it's 39 for 2. I think to your question as well, we're seeing the short ball used both as a plan, but the pitch receptive to it. So if we cast our minds forward as well, you would think that Holder and Rabada, etc. would enjoy the bounce of this surface. They like bowling here at Ahmedabad. Yeah, 39 for 2. Massive crowd here already. This is a big game. This is an IPL final. Any score in excess of 200, 210, 220 will be a really good score. Rashid. He's had a good season, 16 wickets for him. Well, the Tata IPL trophy, and it
It arrived in the Tata Sierra. Legend, a lot of people grew up admiring, with legendary interior space, comfort and performance. He's got better and better. Rashid, as the tournament has gone on, grown in confidence as he started to pick wickets, mixing it up quite well. Bowls a slow delivery very smartly. Also, good cricket delivery. He's not express, but he bowls a good line, good length. Can he repeat that last ball? Jumped up at Sindhu there as well. There is a man in the team. Yeah, going back to the Shubman Gill wicket, we talk about the use of the short ball. Now, Gill has this propensity to run down the pitch early, so that's the ball before the wicket. He charges. Hazelwood keeps his eye. The next ball, the wicket ball, he's actually deeper into his crease. But the bowler is smart enough, skillful enough to hold his length, but you have to keep half an eye as you get into your gather on where the batter is moving forward or back, particularly those guys who like to do it. So it's good on Hazelwood and company so far. Misses out there. Full toss. Normally puts that away. Two balls left in power play. 2 wickets have fallen. Shubman Gill scored a magnificent century a couple of days ago, but Josh Hazelwood's got this ability to surprise the batters with the extra bounce that he can generate. He got that, and then Bhuvneshwar Kumar, very smartly directed bouncer. Nicely helped on its way. He'll be disappointed with that delivery. It was a good over till then. Still 1 ball left. Yeah, as I look at the construction of this over, the one thing, and Hazelwood is at mid-on and Patidar is at mid-off. You go back to the first ball of the over where he hit the splice of the bat from a length. I think he's gone away from that too quickly to variations of slow balls and a full toss attempted Yorker. It's better to end the over at the end of power play. 45 for 2. So as he ended that over, Sunny, Ravi and viewers, that was the ball that I thought he would build on after bowling the exact same ball, first ball, make the batter hit your best ball. So I think that's something Rashid will reflect on that over and possibly say, I don't have to try to stay that far ahead when the ball is hitting the splice of the bat. .45 for 2. Now that we're done with power play, spin being introduced straight away. Another man who's had a really good tournament. His economy rate excellent. Down to understanding what is a good score, as Ravi Shastri alluded to. What might be a good score here on the surface, considering the strength of the Gujarat Titans. Excellent bowling as well. You've lost your 2 main scorers this season. So what is that good score that you're looking at, considering your bowling? Chest the single. Well, at the current rate, they get to about 148, 150. That's not going to be
enough to put pressure on a strong RCB batting lineup. I think you need to get anywhere between 175 and 195. Maybe 180 to 195 would be something that will put pressure. So I reckon anywhere close to 200. From here, if they get a good partnership going, 180 minimum. And then if they can push it past 200, they'll feel they are very much in the game. By no means a match-winning score, but competitive. You can see a lot of the BCCI office bearers here for this big game. Such a clever bowler, Kunal Pandya. First over after the power play, they've lost 2 wickets and he's trying to capitalize on that. He's bowled 5 deliveries for a single each. So a good start here from Kunal Pandya. Just 5 runs conceded, 50 for 2. For 2. Still Rashid. Well, the Kingfisher Entertainment stage, that is the Kingfisher Ultra Vibe Check Zone, where music, entertainment and gold standard vibes come together at the IPL playoffs. Massive crowd in here, as one would expect, for this grand finale. Plenty of support for RCB as well. When they won the toss, the noise was deafening to the ear. All the hotels, aircrafts, all full, all leading this way. And you'll have a crowd in excess of 110, 115,000 here. You heard the call by the captain clearly, didn't you? Very clearly. In fact, it was said, call loudly. But then I thought quietly there, I said, hear properly. Get some oil in those ears. Clean it up. It's something you ought to think on your feet too, Sunny, there, when suddenly you have both captains walking towards you saying that I have won the toss. Get 2. Luckily, I had one experience before in a World Cup final in 2011 when Kumar Sangakkara and MS Dhoni came out to the toss, and Kumar said something.
Dhoni started walking towards me, as did Kumar. And Jeff had not heard it. Jeff Pro was the match referee. So we'd do it again. Dhoni thought he had won it, but then it was Sangha who won it. Dhoni wasn't happy, but he chased down the score and was the man of the match. Shubman wasn't happy, chased down the score and was the man of the match. So some similarities there. Interesting experiences with all the noise and the volume. It's not easy, it's not straightforward. And Rashid has been better in this over so far. He still has to close out the over. I wonder whether they give Romario Shepherd an over in the middle of the innings early rather than when they're under pressure. If they need to go to him, you still want to throw all your ammunition at Jos Buttler in particular. Swings, taken in the deep. Straight down the throat of Longhorn. Devdutt Padikkal is never going to miss that. And looking to up the ante, Sindhu is the man dismissed. And it's the earlier deliveries, really. He scored such a good over, Rashid. Just 5 runs, including a dot ball, which on the 5th ball was the dot ball. That put the pressure on Sindhu, and he thought that he will look to do something different. You can see that no balance in that shot. So no balance in that shot means no power. And yes, he can scream as much as he wants it himself. He's got plenty of time to reflect in the change room. 55 for 3, 20 to Sindhu. $55 for 3. Krunal Pandya will continue. First over, just 5. Got such an outstanding record. He's played 4 finals. He's won all 4. He's got 2 Player of the Match awards in a final. I'll tell you what, your colleague, Josh Hazlewood, he's been in 5 T20 finals, 4 ODI finals, and he's never lost one. Looking to be attacking, just doesn't quite get the elevation. Mr. Kalamdar continuing with that hard length. Ian Bishop talked about it a number of times. Don't go away from your strengths. Make batters hit you off your best ball. Something about this RCB side. Devdutt Padikkal comes in here as a cricketer transformed. You think maybe Bhuvi is tapering off in his career. He comes back. Bowler transformed. I think it's a confidence sign. The fact they won last year, I think, took a lot of weight off their shoulders. The pressure of not having won an IPL trophy can weigh on your mind. Much more relaxed, much more confident, and less pressure. He wins it today, Krunal Pandya. He joins his brother Hardik with 5 trophies. Karan Pollard's got 5. MS Dhoni's got 5. Only 2 have got it 6 times. Rohit Sharma and Ambati Rayudu. Rohit, of course, if you remember, with the Deccan Chargers first year. And thereafter 5 with the Mumbai Indians. Ambati Rayudu split 2 equally. Went back to CSK. The middle order will be tested. It's not the most powerful middle order in terms of batting averages among the lower in the league. You can understand that. It's probably because the top 3 have been so good.
So another tidy over. Just 4 runs off it, 59 for 3. And Nitin Menon will tap his watch. Say the first strategic timeout, and it's one that RCB will be far happier. We might speak, eat, and celebrate differently, but the passion we share for our cricket teams is the same. Together we cheer for those we love. And the only team we support more fiercely is family, wherever they live. Send money back home with Remitly. Download the app today. Deliver more with the world's #1 forklift brand. Get Toyota's legendary reliability. Get smarter energy solutions. Get Australia's leading service network. That's the Toyota Forklift Advantage. Get a Toyota forklift. What does it take to be a master? Determination, creativity, obsession. Discover excellence. Expect delicious. By the Lindt Master Chocolatier. Somewhat of a surprise to us all. Been out on field, Darshan straight away, had no hesitation to go upstairs. And at this stage, you thought, what a start. And then Josh Hazel, like he's done so many times, gets the big wickets in the big games. Very next over, Bhuvneshwar Kumar standing up under pressure. Maybe even the biggest surprise, Josh Butler down to number 4, trying to extend the batting. Shanking was the 3rd wicket to go. 2 good catches there. You expect them to be taken at this level, but they're to run a fair distance. So Bhuvi 2 overs 1 for 11. Hazelwood 2 overs 1 for 15. And Rasik Stalamda 2 overs 1 for 11. Everything going in their favour at the moment. On the big screen, तो चलिए सारे मिलके अहमदाबाद, everyone count down 10, 9, 8, 7. So that's the end of the Seattle strategic timeout. 59 for 3 already. Talking of legends, here's another we grew up admiring. It's back with legendary interior space, comfort and performance. The Tata Sierra is the preferred choice of over 30,000 families now, right across the country. Is it your time then to bring home the legend? Lawrence Duffy comes. Jacob Duffy comes back. My old friend, producer Lawrence Duffy must be delighted we remembered him. Right, Jacob Duffy. First over for 13. Captain's got all his moves right so far. Maybe except that one. Right, Dinesh Karthik joins us. There, I knew the smile would be there. I knew the smile would be there. It's a wonderful position to be in, isn't it, at the moment? Is there almost, can you almost start thinking there's a second trophy coming? No. I thought think you might there's say a long way to go. We're just sticking to a process which is to try and get the big 3 out. We've got 2, we got 1 more. If we can get that as early as possible, then definitely we're putting a stronger step towards what you just said. That short ball, both to Gill and to Sai Sudarshan, was that all part of the planning before, saying let's go hard at them like that? Yeah. Both the bowlers felt that the odd short ball is important because this pitch has bounce, and they executed it quite nicely. To be fair, Shubman Gill wasn't that short. I think he picked up one that was slightly full, probably. And DK, a lot of these players have got experience of winning a title now. Was there a different feeling coming in today around the group? A little bit, I must say. You know, when you have people like Hoff, who's been part of many a trophy, and he has this habit of winning big games, and he knows what it takes to win a big game, there's a sense of
calmness actually when we have those bowling meetings, and that's so important. And I'm talking about Hoff here because he's a big influence on the bowling group. Bhuvi, who's won a few titles, Virat Kohli, as you know. So these are three important names there who won titles and know what it takes to win a big game. DK, what's your reading of the surface up to now? Because we've really had some high-scoring games in Ahmedabad, but this surface, what do you make of it? I'd like to think probably it's a touch slower than normal, but it still feels a decent batting pitch if you apply yourself. I think we have bowled well and we put pressure on them. There's fielders everywhere. There's fielders everywhere. Don't say that, Aksha. DK, you're in the dugout now. You're not in the commentary box. But tell me, 62 for 3. You talked about the surface slightly slow, but you'd still need to get 200. Wouldn't it to be a challenging score? I mean, put on your broadcaster's hat, not the RCB hat. To be honest, you know, the lesser the better for us is all I'm thinking. I'm not able to process how much we should be scoring because we're not batting first. I'm just thinking how quickly can we, how small a target can we keep ourselves, to chase basically. I'm genuinely not able to put the Gujarat Titans hat to think what is a good score. Still looking good for RCB at the moment. I'm delighted you mentioned the calm. That comes, I think, with being a champion. And RCB have played like a champion, played front runners. That's an interesting one too. Happy being front runners right through as the favourites? I think so, because we set a mindset of trying to be attacking champions. We want to be trying attacking towards the second title. One thing that we refrained from using was language talking about defending our title. We spoke about trying to get to the second title. That's what we've constantly spoken about, and that's made a big difference. There's another. There's another. It's wonderfully taken. Now Duffy joins the wickets. Washington Sundar can't keep that pull shot down. Rather, he can't get it to clear the boundary. Send it up. So another goes down. 63 for 4. Thank you very much to Dinesh Karthik as well. He'd be overjoyed sitting in that We dugout. have an umpire review all for the a fair RCB catch. fans. I've checked the feet. It's a fair delivery. Can you give me the first angle of the catch, please? Well, look at it, but it looks all right. Yeah. Keep it rolling, please. Okay, can you just take it back? Yeah, rock and roll there for me. Okay, thank you. I have the ball on the ground between the fingers there. I'm ready with my decision for the big screen. The fingers were beside, not beneath. That is what you need to look at. On first glance, you wonder if the fingers were beneath. They were not. They were beside. That is what the umpire thought. And the correct decision, because you see how far it's the split between the fingers. The wider the split, the chances of the ball touching the turf is much more, as opposed to if the fingers are closer together. Just checking if the batsmen have crossed. Wow, they would have been celebrating, and with good reason. It was actually, he did very well to get there. Jordan Cox, the sub. He looked like he thought he had taken it clean. A lot of us, all of us here thought it was taken clean. The fingers were not underneath. That is what J.R. Madan Gopal wanted to see. They didn't cross, so no run. But they'll just be happy to have Washington still there. It's 63 for 3. Interesting to see the role that Josh Butler plays here, the style he plays in rather. Yeah, and also see what Krunal Pandya is trying to do. He's not experimenting too much, just bowling stump to stump at the moment.
Squaring his pace, you can see the odd ball tripping as well. Just stopping. He played a lot of cricket here too. Last year's final, 4 overs, 1 for 17. Jordan Cox has gone off. Ball, get it back. He talks about the calmness. DK talked about the calmness with all the experienced players in the side. Look at it again. At that point, it's all right. Now, when it goes down, what the umpire's got to judge is the fingers were beside, yes, but if the ball touched the ground, was it just picked up a little bit earlier? So he reckoned it had touched the ground. This last free play is a touch interesting. Let's take a look at this one. The fingers are beside, underneath. Depending on which side of the fence you sit on, you could argue till you're blue in the face, couldn't you? Either on first glance, it looks like it just skims the turf there, and the fingers just go together at the last second. Comes back for 2. In spite of that, only 4 of the over. 67 for 3 from 11. Jacob Duffy will continue. They're close to getting a wicket. He's rotated his bowlers well. Krunal's the only one who's bowled 3, all the others 2, and they've all delivered. Washington lucky to be around. Right, in the last ball of the previous over, we saw the first sign of aggression from Butler. Then again, the ball's not quite coming on as it normally comes on the surface in Ahmedabad. Hence, from Gujarat Titans' point of view, they'll want to get past that 160. From here, 160, 170, at least post some score on the board. Lowest first inning score to win an IPL is 129. Happens, doesn't it? When you're losing wickets, the run rate is like that. You find the fielders. He's gone to 18 of 20. He holds this game. He has the edge. You've seen how owning the edge makes a difference on the field. Do it off the field too. Visit rupee.co.in and apply now for a RuPay card. The last couple of balls at Joss Butler's face, we've just seen him change gears. It's been a long time since the last boundary, 34 balls. That pressure's just starting to build. We saw the previous over, last ball, trying to take Krunal down the ground. Now he's just shuffling around his crease to Duffy. He's looking for any kind of length, in particular that he can get up and over mid-off. Going at 6.1 and over, so they'll have to start thinking of even the 150, 160 that Ravi talked about. Even that is 10 and over from here. Again finds the fielder. There's 3 on the boundary there. We know how important top order wickets are against this Gujarat Titans outfit. Shubman Gill was the first to go. Patidar to make some yards, and then the 1-2 punch by Sudarshan.
to us all. Shantindu at number 3, he was the player. Shubman Gill, he'd gone down the wicket a little earlier. He's got a fair distance to cover, 19-20 metres. Jacob Duffy only had about 3 metres to go, and he didn't want a bar of that. He said, over to you, skipper. And so Sebastian. Tesh made some good yards, made it look really comfortable in the end. Did the work early, got nice and set. Comfortable catch. Only 6 of that Duffy over. 12 gone now. It's 73 for 3. Kunal Pandya. Oh, gone, gone. He is so canny. He is so tricky. Very, very simple from a man for all occasions and seasons. It was building up. Butler was trying to change gears in the last over. He got frustrated. The first ball of Pandya was always going to be an attacking shot. He decided to come down the wicket, but Kunal Pandya outsmarting him on this occasion, going for that wide line Yorker. That is experience. That's masterful from Pandya. A huge wicket, Josh Butler. And the big 3 from GT is sitting on the side now. They're in trouble, and they're going to have to rebuild. Butler goes for 19. GT 73 for 4. Interesting. Rashid Khan ahead of Jason Holder and Rahul Tewatia. It's not that Rashid cannot score runs. An interesting move. Let's see if it pays off. So Sindhu up at 3. So they've maneuvered the batting order. Too short. Sunny, how do you extricate yourself if you're GT from this situation? Well, yeah, the thing would be to maybe look to build a partnership, and that means, maybe not play shots up in the air for a while. Of course, you don't have too many overs left. This is the 13th over. Maybe an over or so. And then Washington will have to take the lead. Washington has been there for a while now, a couple of overs. Someone like Rashid is relatively new to the IPL. Washington is an experienced hand. And which is the reason why I'm not sending Jason Holder over the bit of a surprise. Good turnaround that Rashid scores a lot of runs. Have a look at it. This is so clever. And it's
great stumping. This is a wonderful stumping by Jitesh Sharma. Now he's look at the way he has the tails off in a flash. Does go after Kunal Pandya. An angel one super six. And Rashid certainly can. That's the plan. When they saw Pandya bowling out his last over, Rashid, the left-hander, to come out and take him on. Nice proactive thinking from GT. So far, so good. With Rashid out there. It's a beautiful six. Over cow corner. 81-meter six. The GT fans are ecstatic. You know, sometimes goes short or it goes wide above stump. Goes with a low arm. And I see Josh Hazelwood loosening up as though he is coming back into the attack to add some more pressure. And there was one delivery in that over from Pandya that he fired in that actually just got stuck in the wicket a little bit, and that will be of interest to Rashid. He was showed early in the dugout. He's been quiet the last few days, or games rather, but he will play an integral part in the second innings for GT. There he is. We all know what he's capable of. I think the seamers as well, they'll enjoy the little stand-up tennis ball bounce here. 13 overs gone, 83 for 4. Outstanding spell from Kunal Pandya, 1 for 23 from 4 overs. Kunal with 2 for 17, I think, in the final last year. And he's been frugal again. Jacob Duffy for his last over. Gets it through. Boundary to Washington Sundar. Very good shot. Very, very good shot. Got right on top of the bounce and hit it with the wrist down. Hit it along the ground. That's a very good shot. Have a look at this. He's a tall man. You probably see a mid-wicket in place, but they've got the fine legs, so they're still perhaps looking at that short ball as an option. That should be 4. There's no chance for Jitesh. It was too wide of him. Interesting from RCB. They've gone more the conventional ODI field here, knowing that GT is under pressure. But if you have those kind of fields in place trying to attack, then maybe a slip should come into play. If you want to push that batter back, you take his feet out of the game. Remember that outside edge is in play. On this occasion, RCB not gutsy enough to put that slip in there, but they've gone back to the normal T20 field now. Cow corner's out again, mid-wicket is out to the deep. And expecting hard lengths from Duffy again now. Get a score, trust Washington Sundar to what is still to come. If you're able to put a 160 on the board, however hard you have to go, that bowling lineup there is capable of excellent things. No weak areas. I know Rashid hasn't taken a wicket in the last 2 games. Holder has been brilliant. Rabada, outstanding leading wicket taker. Siraj, superb partner. Striking again. Striking again, and applause from the non-strikers end to Rashid Khan. Oh, that's a magnificent shot. Now we know why Rashid was sent ahead.
a magnificent shot. Hit it on the up. This one is called a little quick. The previous one was a slower delivery, but look at the way he just cleared this front foot and went straight back over the bowler's head. And it's just the injection of fuel, of momentum that GT's been waiting for. 15 of the over already, and 2 balls to go. For midfielders leg side. And of course, high above the stadium, something's catching all the action. And it's the Kingfisher bird cam, giving you the best seat in the house. And this battle that GT and fans will be hoping is seesawing. Deep third comes up, mid-off goes back to long off. Guppy's finished, none for 38, 99 for 4. News coming to you, the impact sub has been activated. Venkatesh Iyer has done well with the bat in the last couple of games since coming into the team. It's Jacob Duffy that's gone. And Hazelwood back into the attack. Straight away he strikes, and again hard leg, short of a good leg, or the bouncer has worked brilliantly tonight for RCB. Mr. Reliable for RCB, Mr. Reliable in big moments and big games. When Josh Hazelwood plays, he wins your trophies. It's a long way to go still tonight, but he makes a big statement once again. Hardly ever misses Josh Hazelwood. He picks up his second now. Only 50 runs in this final. Huge impact from him, and the RCB boys around him are very happy. Arshad's played a good hand, 15 of 6. It's 99 for 5. Attacking on a new batter coming in for Gujarat Titans, Tuatia got a half century in Dharamshala. Only his second in his journey in the IPL. But good from Hazelwood. And when you get a chance to see it again, look at his grip. He's been doing it all season, feigning the slower ball at times and going hard into the pitch. False start. You have a lot to be proud about, Gurvinder Singh, sprinter, 10.9
the 100-meter sprint. Singh had a nice last weekend. But again, look at this grip from Josh Hazelwood on the wicket ball again. It looks as if he's going to bowl a slow off cutter. But no, he just releases the ball at good pace and it climbs onto Arshad, cramping him for room, very accurately bowled. From the captain, very simple, and with that cheeky bowling attack, you cannot take your foot off the pedal here. As a batter, you're out there trying to solve problems, and when Hazelwood's bowling, he gives you a lot of problems to deal with. On this occasion, unfortunately, a misfield there, but he poses a threat with every single delivery he bowls, whether it's through accuracy, smart thinking, execution, disguise. He's got it all. And that's why he's the go-to man for RCB, especially in final cricket. Look at the length that he bowls. Look at the RCB paces. They bowl that hard length. And which has made it different. With the tendency to plant your front foot forward, put your weight out there, so it becomes sometimes a little bit difficult. Bhuvneshwar Kumar got a good bouncer. Well-directed bouncer. And they change up to cross-seam bowling as well. They also use the width of the crease, jumping a bit wider, coming a bit closer, change of pace. So it's not just the length, it's constantly making the batters guess. Again, doing everything from just short of a length at the moment. And as we go to the rest of the bowling now, Bhuvneshwar has two. Rashid has a couple. Josh Hazelwood has one more that you think he will come in to execute. Who bowls the next one? Is it Bhuvneshwar? Is it Rashid? That depends who you feel will be the best dead bowler here tonight. It could be any of them, and that's the luxury of choice that Rajat's got. You can go with either of them. If he feels hard length, Hazelwood's probably the best at the back end, but that might change to Yorkers, where Rashid and Bhuvi comes in again. Slice of the bat is taking a beating tonight so far. 15 overs completed. 105 for 5. And Nitin Menon says he needs a break, and we all will take a pause at the CFI's strategic timeout. They're smiling. Baby, we come to you first. Andy Flower, DK, relax. It's most definitely gone according to plan so far, but they will know, with the experience that's right there in that screen, they'll know this game is not done and dusted. And that will be exactly what Virat's telling them now. Stick to the plans, guys. This game is not over. We need more wickets. If we can restrict it. Runs a ball, which is we are looking at about 160 runs now, looking at about 165. That's the minimum that they should be looking for, which is 10 runs and over. That's the only way they'll get their bowling. Their bowlers will feel they have something to bowl with. So there's still bowler to come. Rashid can bat best as well. So I think this is good time for both
taking wickets, bowling a lot of dot balls first, and then taking wickets, really executing well. Very, very smart from Krunal Pandya. Seen Butler coming down, throwing it wide. Our shot played a decent hand, took a bit of a risk with him, he hit a couple of sixes, and then got dismissed. But Gigi just can't find a way to build momentum in this innings. But there's still 5 overs to go. It's not too late. Coming to the end of the Sea and Tyres strategic timeout. Into the break. And of course, it's time to acknowledge Green Dot Ball, a joint initiative by the Tata Group and BCCI. More than 6 lakh tree saplings have been planted so far in states like Assam, Kerala, Maharashtra, Himachal Pradesh, and Gujarat. Thank you, fans, for cheering for Green Dot Ball. And it is Bhuvi. 27 wickets this season so far. KG hasn't bowled yet tonight on 28. Starts off with a good short delivery. Bhuvneshwar Kumar. He's such a clever bowler. He knows that they will be looking to get on to the front foot and, hit on the up. So not quite giving him that length. Not bowling in the slot. Two is the call. He's very swift. Washington Sundar is very swift between the wickets. But this is what they need to do. The previous ball was a dot ball. They've got 2 runs. And you saw the length again, short. Not in the slot, not pitching it up where they can get under the ball and hit it over the top. Get it around the shoulders, get it around the armpits. That's what Bhuvneshwar is doing. Not express, but he's such a good bowler where he'll direct it in an awkward situation for the batter. Call is for 2 again, and they should get it. On that occasion, Ruby bowled long on up to mid on, almost telling the batter he's going to change his plans, but he didn't. And that in itself is bluff. Batters sometimes overthink things. You see everything the bowler is doing, what the captain is doing, and you start predicting or premeditating a certain delivery. But on that occasion, Ruby very smart, bowling exactly the same delivery. Same field, mid on is up in the ring, 3 on the offside. Some stage, he's going to use that Yorker. Tata IPL Green Dot Ball from the season KG Rabada. Chance to add to that tonight with Mohammed. Siraj, he's an excellent from over England's last game. Archer, this season has come to an end. Bhuvi still has a chance to add 1, and Narayan was outstanding. Excellent bowlers in that list. Here's all of them. Maybe you did. Middle on middle, up in the ring. Very smart. Very, very clever from Wild Watia. Yes, he's the Iceman. He's got such high school temperament. This is exactly what he will keep on doing. He'll match the ball here. Slam the odd ball. Look at the way he gets jumps up with the bounce. Very nicely played. Crazy about that field. It restricted Ruby a bit, telling the batter he's definitely not going to bowl it full. Back to conventional field, long off and long on out. So now he's got options off that Yorker and he can still bowl hard length. Call. The end of the over. 16 gone. 115 for 5.
He's been magnificent this year, Rashid Salamdar. 2 overs, 1 for 11 so far. Needs to clear the fielder. Unlikely. Unlikely. The catch is taken. Rashid Salamdar, what a season he's having. You wondered when they lost yesterday what the support would be like. He's been magnificent. Sevakia is gone. It's 115 for 6. Now got 18 wickets. Just a slower delivery, you can see that. Didn't quite get up in the middle of the bat. And Rajat Patidar is a very, very safe pair of hands. 115 for 6. Sevakia gone for 7. Rajat an older comes in. I thought he might have come in a lot earlier. He's just such a calming influence. I thought he might have handled the situation. Maybe even from number 5 or 6. Now his job is to give himself something to bowl at. It's been a wonderful addition to the Gujarat Titans. More with ball than with bat. He's only made 58 runs. But he's got the ability to hit the big ball. At the moment, this is a man on the cusp of something very special. 2 for 11, Rashid Salamdar. Gone through so much in life. Started as a very young man for the Mumbai Indians. Then had to miss out on a couple of years. Now here he is in the final. It's a gentle push. Bhuvneshwar single. Got off the last ball of his previous over and then the first ball of this over. Rajat Patidar running backwards and taking the catch. See the choices that were made with their bowling. For so long, RCB were looking for a snappy side. See all the choices. And that's a look at Tuatia after he was dismissed. And so, our colleagues have talked tonight about sometimes the ball not coming out. We heard it from Dinesh Karthik, and I think where he said it's kind of holding sometimes. Or Seaman hit the toe of the bat, so it hasn't actually come out as Tuatia there would have liked as he glanced down at the toe and then the surface. So it takes some adjusting to. So many young talents coming through this year. Emerging player of the season. Forget the first name. Ankarish Raghuvanshi had a very good season too. I thought Kartik Tyagi's return of Kartik Tyagi was a highlight. As was the second season for Prince Yadav. But what about Rashid Salamdar? 18. They went heavy on Rashid Salamdar in the auction. That's one of the qualities of RCB this year. They've identified people in specific slots, whether it was Duffy as a like for Hazelwood, whether it was Rashid Salamdar who they thought was coming of age. Magnificent big auction, but a very, very good mini auction too. And it's the bowling. With RCB, you always know there will be batting. They have a very powerful batting lineup all the way down to number 8. It's the bowling. For an over. Just 6 runs off it and a wicket in the 17th. 121 for 6.
Josh Hazelwood will bowl out. 3 overs, 2 for 21 so far. And some runs coming. Might be in a trickle, but they're coming still. They're coming largely from Washington Sundar. And he's got to play the big role here now to take them to maybe another 150 or thereabouts. Not going to be easy. Got inside the line of the ball again. It was a very well-directed bouncer, accepting that Sundar had got inside the line of the ball quite nicely. So many people here for whom this game meant so much. Even Josh Butler, someone like him who's been around for a long time, yet to win an IPL title. Got to the final with Rajasthan Royals back in 2022. That was the year he won T20 World Cup as captain of England. Look at the strength of this batting side. Remember Venkatesh Iyer in there up to Kohli, Iyer, Patidar, Kumar, Jitesh, David, Shepherd. Wow. Beats the fielder, but they're supporting the deep. 150, really. I know it's slowing up a bit. 150 doesn't look threatening. Fielder and Deep Swelling did a very, very good job running and pushing it to just 1 run. Lots coming there. Yeah, sure, it had a big part to play in the construction of this stadium. You've had a haircut. Vaibhav Suryavanshi had a haircut. Now that might just be the gap. He does well knowing single over it. So more runs coming through boundaries in this over. And good batting in difficult circumstances from Washington Sundar. He should have just been able to pull that back. 41 from 31. It's a strike rate of about 130, considering he was adjudicated to have been dropped on 4. If he can get them past 150, if he can do that, it's something to bowl at with their lethal bowling ammunition. I'll have to pull that again. Jitesh Sharma saying that there's something there. Still got a couple of reviews taking it. Might have been brushed something on the way. Umpire's called wide. So he We have a player review for White. Bat and the glove. Ball has gone past the body as well. Satisfied, no bat or glove involved. AP, stay with your decision of White. संजय आपने सही कहा, अगर 160 भी बन जाता है तो फिर आपके पास एक मौका है. पावर प्ले इंपॉर्टेंट रहेगा फिर. जिस तरीके से रबाडा और सिराज ने बॉलिंग डाले हैं तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक आध विकेट ले सकते हैं और दबाव डाल सकते हैं. फिर से लेग स्टंप यॉर्कर की कोशिश थोड़ा सा बाहर था जॉश हेजलवुड. आउट द लेग साइड अपनी काफी गेंदें, कोई छोटी गेंद भी डाली थी ओवर की शुरुआत में. वो चल रहा, वो जो साई सुदर्शन के लिए जो लेंथ या लाइन डाली थी भुवनेश्वर कुमार ने, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश.
लेकिन चौका मिल गया। 2 बाउंड्रीज, 12 रन अभी तक। और एक और बात है संजय, जिस तरीके से आरसीबी भी चेस किए हैं इस आईपीएल में, वो ऐसा नहीं देखे कि चलिए अगर आपको 7 रन या 8 रन चाहिए तो फिर उसी रफ्तार से जाएंगे। अच्छी शॉट यहाँ पे, गुड फिनिश टू द ओवर जीटी के लिए। ओवर भुवनेश्वर कुमार एक और विकेट ले जाएगा उनको टॉप ऑफ द विकेट चार्ट से एक बार फिर। शॉट अच्छा खेला है और बहुत जरूरी है टाइटंस के लिए। हर रन, हर चौका, हर बाउंड्री। वॉशिंगटन सुंदर अकेले दम पे मोर्चा संभालते हुए यहाँ। और इस सीजन में यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज्यादा रन बनाए। आउटसाइड ऑफ स्टंप से वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का इलाका भले कितना भी छोटा हो, वो बढ़िया तरीके से ढूंढते हैं। बहुत प्रोडक्टिव शॉट बना लिया है अपने आप के लिए। जैसे मैं रन चेस की बात कर रहा था आरसीबी का संजय और अनंत, यही है कि वो काफी तेज रफ्तार से करते हैं। तो जीटी के लिए एकमात्र प्लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जल्दी आउट करना, वो तो चेज मास्टर विराट कोहली। अगर उनको जल्दी आउट कर देते हैं तो फिर बाकियों में उसी तेज रफ्तार के साथ वो खेलने जाएंगे तो फिर आपको एक मौका है। अगर आप 160 170 के आसपास रहेंगे तो फिर आपको एक मौका है यहाँ पे। फिर ऊंची गई है, फील्डर नीचे, हेजलवुड, दैट्स इट। टॉप ऑफ द विकेट शॉट ककीसो रबाडा के साथ एक बार फिर से भुवनेश्वर, रिलायबल कुमार। चौका मिला पहली गेंद पे, लेकिन आखिरकार वही सफलता जिसकी तलाश में आए थे इस 19वें ओवर में। रफ्तार इतनी तेज नहीं जितनी बाकी गेंदबाजों के पास है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, मगर डायरेक्शन बिल्कुल सही, ऑफ स्टंप के बाहर और उछाल तकरीबन कंधे के आसपास, और वहां संपर्क होना मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए जो खेलना चाहते हैं ऑन साइड की तरफ। वहां कॉलिंग भी अच्छी, हेजलवुड ने कैच किया, जेसन होल्डर आउट साथ पे। हुई वो आउटराइट टॉप ऑफ द लिस्ट जाना चाहते हैं। अब कमाल का मौका खुला है उनके पास एक बार फिर से। जेसन होल्डर, ऊंची कद काटी है उनकी, उनको बाउंसर डाल के उस तरीके से फंसाया। हेजलवुड ऊपर थे थर्ड की पोजीशन में। आपके पास वेरिएशंस हो या पेस हो, देखिए राशिद खान ज्यादा मौका नहीं मिला है। आपके पास जो भी है बॉलिंग में वेरिएशन या पेस, कब डालना हो वो सही तरीके से भुवनेश्वर कुमार जानते हैं, इसलिए पर्पल कैप में बिल्कुल आगे।
कैसे सेट करते हैं बल्लेबाज को और तब बाउंसर डालते हैं। आज ज्यादातर बाउंसर पे उनको विकेट मिला है। ये देखिए सबसे ऊपर भुवनेश्वर कुमार 16 मैचेस में 28 विकेट्स। वो देखिए रणनीति एवरेज रन्स पर ओवर लेस देन 8। मतलब 1.5 का इकोनॉमी का फासला तो है, एक मैच भी तो कम खेला है। बेस्ट एवर सीजन भुवनेश्वर कुमार के लिए, बैक टू बैक पर्पल कैप विनर। लेकिन टीम कभी किसी ने नहीं जीती, तो खुद को कमाल का मौका दिया है जीटी के खिलाफ इस मुकाबले में। तो कगीस और रबाडा अगली पारी में नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक और शानदार स्पेल समाप्त 8 रन आए इस ओवर से। आखिरी ओवर इस पारी का। राशिद खान बाजुओं में दम है और टाइटंस को ले गए 150 के पार इस पहली गेंद के मैक्सिमम के दम पे। इंतजार था, जीटी के फैंस को इंतजार था इस हमले का। यहाँ पर स्लोअर बॉल को पिक किया, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल, थोड़ा सा इंतजार किया और बिल्कुल डिस्पैच किया साइड स्क्रीन की तरफ। थोड़ा सा और करना होगा इन्हें, 2 या 3 मैक्सिमम की जरूरत, क्या और 2 लगा सकते हैं, 160 के पार ले जा सकते हैं क्या नहीं? इसी मैदान पे, इसी पिच पे 155 पे समेट दिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती को। फिलहाल विकेट मिलेगा राशिद को एक बार फिर से, तीसरा उनके खाते में। हैट्रिक नहीं आई ना सही, लेकिन जस्ट व्हेन टाइटंस और राशिद खान को लगा कि अब थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया जा सकता है, फिर से पलट के रख दिया डिफेंडिंग चैंप्स ने। पिछली गेंद छक्का जड़े थे, लेकिन ये छोटी गेंद फिर से एक और जीटी के बल्लेबाज शॉर्ट गेंद पे अच्छी कैच वहां पे रोमारियो शेपर्ड द्वारा। तीसरा विकेट रसीदार के लिए और राशिद खान आउट। 151 फॉर 8 जीटी। रबाडा नहीं, सिंगल नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद। एक एक्सप्लोसिव सीजन में एक और अनुशासन से भरा बॉलिंग परफॉर्मेंस आरसीबी द्वारा ग्रैंड फिनाले में। अब तो पर्पल कैप के लीडर बोर्ड पे फिर से अपना स्थान, अपना नाम लिख दिया है भुवनेश्वर कुमार ने अभी के लिए। रबाडा जिनके हाथ में फिलहाल बल्ला है, उनके हाथ में जब गेंद आएगी तो वो आखिरी दांव खेल सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी रन चाहिए। जबरदस्त गेंदबाजी एक बार फिर से आउटसाइड दी ऑफ। कोई रूम ही नहीं कि अपने बाजुओं को खोल सके वॉशिंगटन सुंदर 49 पे लगभग अकेले दम पे लड़ाई लड़ी है उन्होंने टाइटंस के लिए। चेज मास्टर आएंगे अगली पारी में। 2025 से आईपीएल में रन चेज में आंकड़े लगभग 700 रन, लगभग 80 का औसत, एक शतक भी है। लगातार 4 सीजन 600 या उससे ज्यादा रनों के इकलौते खिलाड़ी ऐसा करने वाले एक आखिरी बार दिखेंगे अहमदाबाद में सीजन।
ये शॉट तो बहुत जोर से गिरा था, लेकिन बहुत जोर आजमाइश आज लगी है इस बल्ले की। एक ऐसा सीजन जहां पे बैटिंग प्रमोशन भी आया, जहां पे अर्शदत भी बना है, और इस फाइनल में दुनिया के सबसे बड़े मैदान में टाइटंस के लिए लगभग अकेले दम पे लड़ाई लड़ी है। तीसरा अर्शदत वॉशिंगटन सुंदर के लिए। अपने आप को ढाला इस रोल में और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है वॉशिंगटन सुंदर को अपना जौहर दिखाने के लिए। क्या 2 या 4 नहीं, 2 ही भागेंगे, रनआउट का मौका जरूर बन सकता है, मगर थ्रो साधारण 2 रन वहां पर मिले हैं और 155 ही वहां पर गुजरात टाइटंस को मिलेंगे डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आरसीबी की तरफ से एक नियर कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस, जहां पर भुवनेश्वर, कुमार, हेजलवुड के 2-2 विकेट, रशीद ने लिए 3 विकेट, और यहां पर काम काफी आसान कर दिया आरसीबी बल्लेबाजों के लिए।
अय्यर बाहर की तरफ। अबे चेज है तो भाई चेज मास्टर में फोकस थोड़ा ज्यादा होगा, पर वेंकटेश अय्यर का भी रोल इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि महत्वपूर्ण है यहाँ पे शुरुआत संजय और ऐश। अगर इस मुकाबले में किसी भी तरीके से गुजरात टाइटंस को जीवित रहना है तो 6 ओवर है आपके पास, जी लो अपनी जिंदगी। नमस्कार आकाश भाई, ये फील्ड पर पहली बार मेरा डेब्यू है। ये अच्छे दिन है फाइनल में डेब्यू करने के लिए। पर आपने सही कहा, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा बहुत अच्छे एरियाज में बॉलिंग करेंगे। पहला अगर उनको सी ऑफ करेंगे आरसीबी दूसरे टाइटल लगातार जीत सकता है। 150 से कम 4 बार डिफेंड तो हो चुका है, ये सच है, लेकिन आखिरी बार जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, तो प्री कोविड बात थी। अब तो उस बात को भी 7 साल हो चुके हैं। इम्पैक्ट प्लेयर अब आ चुका है, रन्स बढ़ने का, वो कहते हैं बनने का सिलसिला जो है वो एक डिफरेंट लेवल पर जा चुका है ना। वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली साथ में बहुत ज्यादा ओपनिंग करने का मौका मिला नहीं है संजय जी, लेकिन सच्चाई ये है कि वेंकी अय्यर जब जितना काम इनको कहा गया है उतना काम इन्होंने हमेशा किया है। और पावर प्ले में तो अच्छी बल्लेबाजी करते ही है, मगर प्लेऑफ्स में भी उनका रिकॉर्ड काफी गजब का है। केकेआर को खेलते वक्त भी जो फाइनल जीता था, एक तरफा फाइनल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, वो मैच में बहुत जल्दी से रन बनाए थे, वो भी लो स्कोरिंग एक अफेयर था। तो क्या जिस अंदाज से अटैकिंग चैंपियन से इस चेज को अंजाम देंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 100% वैसे ही खेलना होगा संजय भाई। पावर प्ले में गेम, अगर पहले 2 विकेट में विकेट नहीं गया, अच्छा स्टार्ट मिला, फिर पावर प्ले में गेम खत्म करने के लिए कोशिश करना है आरसीबी को। और वहीं पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी जीटी के लिए कि यदि वो ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते वक्त 2 या 3 विकेट्स अगर हासिल करते हैं तो फिर अन्य जो गेंदबाज है वो भी गेम में आ जाएंगे। देखते हैं गेम ऑफ कैट एंड माउस। मोहम्मद सिराज पहला ओवर बहुत महत्वपूर्ण, स्विंग करा के गेंद अंदर की तरफ ला सकते हैं आप, या स्टंप्स पे डाल सकते हैं। डाली तो है बिल्कुल उसी जगह पर, बिल्कुल सही ठिकाने पे गेंद गिरी है मोहम्मद सिराज की। अच्छा लगता है मोहम्मद सिराज को अटैक करना स्टंप्स को, फिर वो फॉर्मेट कोई भी हो। अभी तक इस आईपीएल में हमने वो लेफ्ट आर्म बैटर को वो इन स्विंग पे एलबीडब्ल्यू करते हुए देखा नहीं है मैंने। मोहम्मद सिराज को वो देखना जरूर चाहेगी आशीष नेहरा और उनका डगआउट। टेस्ट मैच का बॉलर है मोहम्मद सिराज, रिस्क पोजीशन अच्छा रहता है, आउट स्विंगर, पर ज्यादा शेप नहीं हुआ। मैजिक बॉल को कोशिश किया, मैजिक मिया हिला नहीं इतना सा। स्टेडी स्टार्ट। मोहम्मद सिराज हमेशा पावर प्ले में विकेट लेता है, और देखिए हाँ, इन स्विंग के साथ थोड़ा एंगल के साथ भी जाता है, उनका डिलीवरीज एंगल अक्रॉस करता है। ऋषभ पंत के लिए किया, और ट्रेविस हेड टकअप किया, अजिंक्य रहाणे को स्विंग में बीट किया। पावर प्ले में बॉल स्विंग कराने के लिए कोशिश करता है और करता भी है। दिस पोजीशन बहुत बढ़िया है। उसके बाद वो नेचुरल वेरिएशन, स्क्रैम्बल सीम, टेक द बॉल अवे। वेंकटेश वो करने चले थे कुछ विशेष, अभी पारी हो जाती शेष। इंटेंट के बारे में बात किया, ये थोड़ा ज्यादा इंटेंट ही लग रहा है मुझे। थोड़ा सा अच्छा देख के खेल सकता है पहला 2 ओवर, इतना बड़ा स्कोर नहीं है स्कोरबोर्ड में। बहुत ही गरीबी मामला, क्या बड़ा रिस्क ले लिया यार एकदम। सर भी देखिए कहां तक पहुंच गया, लॉट्स ऑफ मूवमेंट। धागे का सूत भर दूर थी ये गेम। नहीं अभी नहीं, थोड़ी सी नर्व्स शायद इस समय वेंकटेश अय्यर भी महसूस कर रहे हैं। पिछले मैच में भी ऐसे शुरुआत की थी धर्मशाला में, पर वो बैटिंग फर्स्ट था, वो पिच इससे थोड़ी सी शायद बेहतर थी, और चौके मार दिए थे 3 पहले ही ओवर में सिराज के सामने। और वहां पर हौसला दिखता है मोहम्मद सिराज का भी और जीटी का भी। वो आंखों में आंखें डालकर खेलना चाहते हैं, डिफेंड करने की कोशिश है। बॉल जरूर वहां पर काफी करीब नजरें थी, बॉल दूं ना दूं मोहम्मद सिराज ने कुछ कहा नहीं, अगर आंखों में आंखें डालकर वो प्रयास है। देखिए सभी खिलाड़ी वहां पर 2 बल्लेबाजों के पीछे पड़ चुके हैं। ये भी बैट के बीच में तो नहीं लगी है।
2 रन फिर भी मिल जाने चाहिए। कभी कभी इंटेंट दिखाने का चक्कर में बैटर्स बॉल को जोर से मारने के लिए कोशिश करते हैं। टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। वेंकटेश अय्यर को नया बॉल के साथ अच्छे अंदाज से बैटिंग करने के लिए थोड़ा टाइमिंग में ध्यान देना होगा। संजय भाई हमारे साथ बैठा है। संजय भाई बहुत बड़ा बैटिंग कोच है, बहुत सारे दिग्गज बल्लेबाजी के साथ काम किया है। क्या कुछ हमको इसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं आप? विराट कोहली के साथ आप मैंने देखा था बांद्रा कुर्ला स्टेडियम में, बहुत बार काम किया आपने। बहुत बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला, उसमें दिग्गज अश्विन भी थे। अब 6 टेस्ट सेंचुरीज इन्होंने बनाई और उसमें से 2-3 मतलब मेरे कार्यकाल के वक्त थी, और एक वक्त तो उन्हें वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो देखिए, काम कोच नहीं करते, काम खिलाड़ी अपने आप करते हैं, और वो थोड़ी सी फिर उसका रिफ्लेक्शन है हमारी तरफ पड़ जाता है। 4 बिना किसी नुकसान। यहाँ पे थोड़ा बेहतर खेले हैं। कगिसो और रबाडा आएंगे दूसरे छोर से, तैयार रहिएगा आप। कगिसो रबाडा, ये बढ़िया शॉट मारा है। अपने लिए जगह बनाई थी वेंकटेश अय्यर ने। इंटेंट तो पिछले ओवर में ही साफ कर दी थी, इस बार एग्जीक्यूशन भी है। देखिए, टाइमिंग की बात की हम लोग, हल्का सा जगह दिया खुद को, और कगिसो रबाडा का जो स्पीड है उसको इस्तेमाल किया, दिशा दिया, एलिवेशन दिया। ये बढ़िया बैटिंग है। संजय भाई, इस वक्त ये भी लगता है ऐश, तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि कैसे थोड़ा सा अपने आप को रोकना है, काबू में रहना है। तो क्योंकि उन्हें इंजरी हो चुकी है, और इंजरी होने का बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप का ध्यान जो है वो थोड़ा हट जाता है, और वो आई थिंक इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि वेंकटेश अय्यर स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, घुटने के अंदर वाले हिस्से में गेंद लगी है, उसके कारण थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड पाते हैं। रबाडा किस तरह से उन्होंने काफी सारे विकेट्स लिए हैं, जैसे हमेशा रवि भाई कहते थे रबाडा का कबाड़ा कर दो, उस तरह से रबाडा ने आज कई सारे बल्लेबाजों का इस सीजन में थोड़ा सा कबाड़ा तो कर ही दिया। एक बाउंस है, इनको भी डाल दो लगे हाथ, क्योंकि आगे की गेंद को तो ये ऐसे उड़ाते हैं। वेंकटेश अय्यर घायल है, शायद इसीलिए घातक है। थोड़ा सा लेंथ में करेक्शन,
हार्ड लेंथ में हमेशा फायदा मिलता है कगिसो रबाडा को। इस बार स्विंग के लिए ढूंढा था हल्का सा आगे की तरफ और एक और बार टाइमिंग के साथ छक्का। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट आरसीबी के लिए। बहुत बड़ा इनिशियल मोमेंट होता है इनका, दोनों ही पैर जो है क्रीज के अंदर होते हैं। एक और चौका लीजिए। ये सिर्फ चौके नहीं मार रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, ये इस फाइनल पे अपनी छाप छोड़ रहे हैं। एक पांव पे खड़े होकर खेल रहे हैं क्योंकि खड़े होना भी मुश्किल है ऐसा प्रतीत होता है। ये बोलना ही चाहिए पावर प्ले तक ऐसे ही खेलते रहो। अगर इस अंदाज से बैटिंग करेगा आरसीबी को तुरंत इस गेम में आगे डालेगा वेंकटेश अय्यर। एंडी फ्लावर का बात किया, आरसीबी के मैनेजमेंट के बारे में बात किया, वो कितना तगड़ा क्रिकेट खेले इस साल। पर ये भी बोलना चाहिए वेंकटेश अय्यर को जिस तरीके से ऑप्शन में लिया है, एक और सीम बॉलर का ऑप्शन मिला पर यहाँ बीट किया कगिसो रबाडा ने। सीम हल्का सा सीम मिला। एक भी बाउंसर नहीं आया, ये स्विंग पे विकेट नहीं मिली है, हमने पहली इनिंग में अच्छे समझ लिया। रशीद सलामदार ने भी शॉर्ट बॉल पे आउट किया। आपकी 11 गेंदें जा चुकी है। इसके लिए थोड़ा सा पिछले वाले गेम को थोड़ा सा ध्यान देना होगा आकाश भाई। पिछले वाले गेम में शॉर्ट बॉल के लिए ढूंढ रहा था वेंकटेश अय्यर, दोनों पैर अंदर रहता है क्रीज से, वो इंतजार करता है कि आप कब शॉर्ट बॉल डालोगे, और जो हार्ड लेंथ वाले बॉल को गलत मान के फुल शॉट मार के आउट हुआ, तो रबाडा का दिमाग में वही रहेगा। भारी किनारा लगा तो जरूर, लेकिन आज दिया है भाग्य ने बहादुर का साथ। चौके से शुरुआत, चौके से फिनिश। कोई डाउट नहीं है। पहले ओवर में ही गेंद लगी थी, पिछले ओवर की आखिरी गेंद भी देखे तो बल्ला चलाया बहुत जोर से। भाग्य का साथ मिला है क्योंकि भारी किनारा लगा तो जरूर था। क्योंकि आज रवि भाई की बात की है संजय ने, तो फिर कहेंगे स्लैश शॉट। आपने एक अच्छा सा सवाल पूछा आकाश भाई। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि पूरे टूर्नामेंट में कितने बार कगिसो रबाडा ने पहली ओवर में बाउंसर डाला। अगर आपको याद है विराट कोहली के खिलाफ भी उसका पहला ओवर जिसमें से इतना रन बनाया एट अहमदाबाद, रन बनाया, फिर दूसरे ओवर में शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया। तो शायद हो सकता है कि जितना स्विंग है सीम है उसका फायदा हो। बीच की गेंद थी लेकिन क्या नया एंगल क्रिएट किया है बॉस। इस बॉल का कोई बिजनेस नहीं था वहां पहुंचने का, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द ये गेंद थी। सीधे बल्ले से गया है ये बॉल, ऐसा नहीं कि कलाइयां मोड़ी।
रखा बॉटम हैंड, लेकिन किस तरह से बहुत ही लेट खेला है। एक अमेजिंग थिंग है ना विराट के बारे में बात करने का, उसका सर एकदम बॉल के ऊपर ही रहता है हमेशा, जैसे ये बॉल दिखा। इस बार नहीं था, पर वो सारी एड्स पे बहुत काम किया ना। अपेरेंटली वो जो इंग्लैंड का एक खराब साल था, उसके बाद हाई फ्रंट फुट स्ट्राइक तक बिल्कुल टॉप पैड के ऊपर, रूट ऑन द गो फोर्स ऑफ द सीजन। और ये चलो एक अवार्ड है जो शायद वैभव नहीं लेंगे, जो बल्लेबाजी से जुड़ा हुआ है, वरना सारे अवार्ड इनके हैं। वो भरोसा रखते भी नहीं है ना बाउंड्रीज के ऊपर, वो ज्यादा भरोसा मैक्सिमम के ऊपर रहता है। बिल्कुल भी वहां पर कोई चिंता का विषय नहीं होगा वैभव के लिए। अगर रेवोल्यूशनाइज कर दिया है T20 क्रिकेट को, और खासकर पावर प्ले को। चौका यहाँ भी लिख लीजिए, जस्ट शॉट गेम थी, उसको अच्छे से पिक किया है। आरसीबी का ये अप्रोच से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इतना सा स्कोर, हमेशा अटैकिंग अंदाज से बैटिंग करो और गेम से हटा दो दूसरे टीम को। इतना छोटा डिलीवरी नहीं था, और पिक कर लिया विराट कोहली ने, लेंथ यहाँ गैप भी ढूंढ लिया। नीचे मारने की वो चाह इनकी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए रिस्ट को रोल भी किया। 100% ये कहते कि विकेट प्रिजर्व करके जो T20 खेलने की कला इनमें है, वो बहुत कम बल्लेबाजों में देखने को मिलती है। बैट थोड़ी ऊपर लगी है, हाँ तो नहीं पा रहे हैं वेंकटेश अय्यर। ये भी हुआ ना कि ऑलमोस्ट फोर्स कर दिया कि आप 3 स्टंप्स के बीच में रहो, वरना विराट कोहली इनिशियली आप चाहते हैं थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद डाले, वो 5वीं 6वीं 7वीं स्टंप खाना है चौका तो ड्राइव पे खाओ, पुल या फ्लिक पर नहीं। जरूर प्लान यही रहा। सीजन भर सिराज स्टंप से थोड़ा पास डाला था और कगिसो रबाडा थोड़ा बाहर डाला, क्योंकि रबाडा को उछाल ज्यादा मिलता है, सिराज को स्किड ज्यादा मिलता है। सिराज ज्यादा एलबीडब्ल्यू और होल्ड करने के लिए कोशिश करता है, रबाडा निक ऑफ और कैचेस पर विकेट लेना चाहता है। यहां देखने को मिलेगा एंटरटेनमेंट, छोटी गेंद, और इसके साथ एक और चौका। वेंकटेश अय्यर, कमाल का बैटिंग, पूरी तरह से डिफ्लेट कर दिया इस चीटी के बॉलिंग अटैक को। इस वक्त वेंकटेश ने 12 गेंदों में 26, स्ट्राइक रेट 216 का, और फ्रंट फुट हो बैक फुट हो वो शॉट्स खेल रहे हैं। ये तो फ्रंट फुट से पुल खेल दिया है, थोड़ा सा हैंडल के ऊपर पकड़ते हैं, अच्छा इनका लंबा स्विंग है। अक्सर ऐसे बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी होती है लेंथ डिलीवरीज के ऊपर, अगर आज ये चांस ले रहे हैं और उसमें सफलता पा रहे, 36 बगैर कोई नुकसान। ये विकेट वाला ओवर हो सकता है कभी होगा। चौके के साथ शुरुआत की है, पैरों की तरफ गेंद, यहाँ पे अगर आप गेंदें डालेंगे तो विराट कोहली दिन रात आपको 4 पे 4 मारते जाएंगे। जरूर वेट कर रहा था छोटे बॉल के लिए, पर यहाँ कगिसो रबाडा एंगल करते हुए गेंद डाला उसके पैर की तरफ, और देखिए ये ब्रेड एंड बटर है विराट कोहली के लिए, कभी भी छोड़ना नहीं है। और अभी वक्त आ गया कगिसो रबाडा का छोटा बॉल के लिए, हमेशा इसी ओवर पे डाला है पूरे आईपीएल पर। स्टैंप ऑफ अथॉरिटी, एक बार फिर ये गेंद खराब नहीं थी, लेकिन इसमें कोहली की क्लास लिखी थी ना।
पहले गेंदबाज जो है को कवर ड्राइव के ऊपर वो ललचाना चाहते थे, अब वो सीधी गेंदबाजी ज्यादा कर रहे हैं और लेंथ बॉल को ज्यादा डाल रहे हैं। तो लेंथ बॉल के ऊपर किस तरह से अंतिम समय के ऊपर डाउन स्विंग में बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके स्क्वायर लेग की दिशा में खेल रहे हैं या फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खेल रहे हैं, ये अंदाज कुछ अलग है। कलाई होगी कला, कोहली का बल्ला माशाअल्लाह। विराट कोहली एंड रन चेज, दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। ये बैटिंग मास्टर क्लास है, इंटेंट के साथ। रॉयल रीगल रेनिंग चैंपियंस बेंगलुरु, देखिए नो लुक शॉट, नीचे की तरफ देखकर ओह क्या बैटिंग है ये। बहुत जल्दी पोजीशनिंग आ रहे हैं, जब बॉल रिलीज करना हो उसके पहले तैयार है। देखिए किस तरह से एक और चौका, चौके हुए हैं गेंदबाज और सारे फील्डर्स। 4-4, 6-4। तगीज और रबाडा 28 विकेट इस साल, लेकिन सामने नंबर 18 का जीनियस आया है। क्या एक्शन रिप्ले हो रहा है रबाडा के खिलाफ। पहले मैच जाओ हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, 5 बाउंड्रीज लगाई थी बैक टू बैक, अब 3 बाउंड्रीज और 1 6 हो चुका है, 2 गेंदें अभी भी बाकी। देखिए टू शॉट स्क्वायर लेग, ज्यादा दूर नहीं था कवर करने के लिए, तेज निकला ये बॉल। ड्रॉप एंड रन फ्रॉम कोहली। ऑप्शन के बाहर नहीं है, यहाँ पीछे फील्डर है और इसको पकड़ भी लेंगे। इंटरेस्टिंग है, 9-10 गेंदों में 28 पे पहुंच गए हैं कोहली। पिछली बार भी इस टीम के सामने इसी स्पीड में भागे थे इस मैदान पर। गूगल सर्च किया, इमोशन में पूछ भी लिया कि रबाडा जीटी के लिए मामले में इतने असरदार गेंदबाज क्यों हैं। टेस्ट मैच वाली पारंपरिक लेंथ को वो T20 के हिसाब से बदल लेते हैं, उनकी एड़ी जमीन को कम छूती है, जिसकी वजह से 145 से 150 kmph में गेंदबाजी करते हैं। खतरनाक उछाल, सटीक सी मूवमेंट, आक्रामक ओपनर्स को टिकने नहीं देते हैं या कहीं देते थे। कोई फॉलोअप क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, गूगल सर्च किया मोड से। क्रॉस बॉल सामने वेंकी, ऑलमोस्ट विकेट पे जाती है, देखिए वाली गेंद, तीखा बाउंसर, ओवर से सिराज, उनके सामने विराट कोहली, 480 का स्ट्राइक रेट, 11 में उनके उसके ऊपर से विकेट आई है। आज थोड़ी टोटल हुए थे, वो नी में बॉल लगी थी, पर उसके बावजूद 26 रन पर बल्लेबाजी करें, सिर्फ 14 विकेटों का सामना नहीं किया। मेरे साथ अनिल और मोहम्मद कैफ। आज विराट कोहली पिछले ओवर में खास करके वो रबाडा के सामने जो शॉट लगाया था, एक स्ट्रॉन्ग फिस्ट रोल, आज उसके ऊपर से ये पहले ओवर में चौका लगाया, फिर से रिस्ट टूटी बॉल पे, ये बहुत ही शानदार शॉट था। हाँ, ये वाला ये चौका लगाया था और उसके बाद
उसी में और एक्सटेंशन डाला और ये कंट्रोल पुल किया, बल्ला ऊपर से नीचे लाया। राशिद खान के बाद डीप स्क्वायर लेग में उनको भी बीट किया, इतना पावर जनरेट किया। इन द एयर, इज इट सेफ? कोशिश की, तो 6 रन मिलेंगे पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर ये छक्का। एग्रेसिव इंटेंट पहली गेंद से आरसीबी के बल्लेबाजों ने, दोनों वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली। अच्छा ओवर है और असर नो लॉस, चौके छक्के बिल्कुल दबाव में। गुजरात टाइटंस ज्यादा कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की, तब रन भी लीक होता है, लेकिन जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तेज गति से बैटिंग की है, बिल्कुल मैच हाथ से जाते हुए जीती के लिए। जब से वेंकटेश को मौका मिला बहुत तगड़े फॉर्म में दिखे, शुरू में मैचेस खेले नहीं, बहुत इंतजार करना पड़ा, वेट करना पड़ा। पहले सॉल इंजर्ड हुए, बैटल खेले, बैटल के बाद इनको मौका मिला और जैसे ही खेलने आए हर मैच में ऑलमोस्ट योगदान दिया है। 15 बॉल 32 नाबाद अटैकिंग अंदाज दिखा आज के मैच में। क्या विकेट गिरेगा? मोहम्मद सिराज छोटी गेंद डाली थी, वो बैक ऑफ लेंथ वाली डिलीवरी इस पे थी, मिडॉन को क्लियर करने की कोशिश। हाँ आरसीबी का वेंकटेश अय्यर के रूप हाँ बॉल कहाँ लगी वो देखने वाली बात है, बॉल नहीं लगी। अच्छा कमबैक है, पहले बाउंसर मारा था, वहाँ छक्का जड़ दिया था, उसके बाद जो प्लान चेंज किया वो हार्ड लेन पे था, ना बॉल आगे ना बहुत शॉर्ट, और वहाँ पे कमर के आसपास वो हाथ खोलने का मौका था नहीं, पीछे गए, दोनों पैर जोड़ लेते हैं। ज्यादा शॉर्ट बॉल थी नहीं वैसे, जैसे शुभमन गिल आउट हुए इतनी शॉर्ट बॉल थी नहीं आज के मैच में। यहाँ भी आउट हुए वेंकटेश अय्यर। सिराज ने बोला भैया देखो फंसा लिए छक्का खाने के बाद। पहला विकेट 62 के स्कोर पर, अय्यर 32। अय्यर की जगह पर देवदत्त पाटिकल, इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर रबाडा, पर इन दोनों पेस बॉलर्स को आज आरसीबी के ओपनर्स ने टेक ऑन किया है और वो जो शिफ्ट है वो साफ नजर आया और इसीलिए इस समय दबाव है जीटी के ऊपर। बेंगलुरु में भी जब जीटी ने खेला था ऐसे ही शुरुआत की थी विराट कोहली ने, छाला में भी आरसीबी ने उसी एग्रेसिव इंटेंट के साथ उतरी थी, यहाँ पे भी रन चेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू में इतना अच्छा इंटेंट दिखाते हैं और रन बनाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है ऑपोजिशन टीम को वापसी करने का। शॉर्ट बॉल डाली या फिर आगे डाली है या टांग पे डाली रबाडा ने, ये बॉल देखे ना आप, ये बॉल ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बहुत आगे भी नहीं है, ना टांग पे पड़ के बॉल बाहर जा रही है, लेग साइड खेलने का प्लान था और रबाडा ने अच्छा कैच लिया वहां पे। मैं समझ सकता हूँ रन कम है, गेंदबाज का प्लान है अटैक करके विकेट मारना पावर प्ले में, जो करते आए पूरे आईपीएल की बात करें रबाडा और सिराज। तो मुझे लगता है शायद ज्यादा और एक्साइटमेंट वो थोड़ा शॉर्ट बॉल या टांग पे रबाडा को हुआ। पिछला ओवर देखे जहाँ पे विराट कोहली अच्छा खेलते, वहां पे काफी ज्यादा हार्ड ट्राई करने के चक्कर में रन गवाया आज के मैच में। ये ओवर सही था, एक छक्का लगा पर उसके बाद एक विकेट भी मिला, 5 के बाद 63 पर है।
शॉट खेला है और एक और विकेट गिरा है अरशद खान के हाथ में। ये कमबैक है जीटी का। इसके पहले वाले ओवर में मोहम्मद सिराज ने वापस भेजा था अय्यर को, यहाँ पे पाटिकर का विकेट लिया है रबाडा ने। अग्रेसिव जो बल्लेबाजी करती है आरसीबी, लेकिन यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल पिछले 3 बॉल पे एक ही रन आया था और ये पहली गेंद रबाडा की लूप बनाने की कोशिश और ऑफसाइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन आगे था बॉल आउटसाइड एज। अच्छा कैच वहां पे अरशद खान द्वारा। देवदत्त पडिक्कल गॉन 63 for 2 आरसीबी। कैप्टन पाटीदार, अच्छी गेंद ये अच्छी डिलीवरी डाली। 56 गेंदों में सिर्फ 1 रन देकर 2 विकेट मिला है जीटी को। ये थोड़ा बहुत कमबैक है जीटी का। वो एग्रेशन जिसके बारे में बार बार पठान पाटीदार ने बात की है, उस चक्कर में ये पहले 2 विकेट गिरे हैं। पहले वेंकटेश अय्यर, उसके बाद देवदत्त पाटीदार। और अब खुद रजत पाटीदार की बल्लेबाजी का रंग ढंग वैसे ही है। ये था वो पाटीदार का विकेट। बल्लेबाज ने पहले स्टंप छोड़ा, गेंदबाज ने देखा, वाइड डाली, रीच आउट करना पड़ा और अरशद पहले आगे भाग गए, फिर कैच पकड़ा है। अरशद ने पहले आगे भागने के बाद मुड़ के दोनों हाथ से अपने दाएं कंधे पे कैच लिया। इसका मतलब अच्छा फिनिश था वहां पे बतौर फील्डर। लेकिन ये अच्छी गेंद थी, हाथ धोने का मौका था नहीं, वहां पे आउट हुए वेंकटेश अय्यर। और दूसरी बॉल देखेगा रबाडा उसे पहले काफी मार खा चुके थे, यहाँ पे ऑस्टम के बाहर बॉल डाली, अरशद खान आगे भागे, ओवर रन कर गए, पर फिर भी पलट के आए और कैच को मुकम्मल किया। अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, वो ये पर्पल कैप के लीडर बोर्ड में इस समय कगिसो रबाडा और यही रहेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर ने अपने स्पेल में 2 विकेट लिया। ये दूसरी बार है कि पर्पल कैप के टॉप में है इस लीडर बोर्ड में। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही, हालांकि आज पहला 2 ओवर थोड़ा महंगा रहा था, तो उसके बाद ये वापसी हुई है रबाडा की। और इस सीजन रबाडा और मोहम्मद सिराज दोनों की जोड़ी ने जबरदस्त काम किया है। और अभी भी गेम बाकी है, यहाँ से वो उम्मीद या फिर सेल्फ बिलीव दिखलाना होगा जीटी को। और उसके लिए खास करके इस प्रकार के रन चेज में विराट कोहली का विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको भली भांति मालूम है कि यहाँ से गेम को किस तरह से आगे लेकर जाना है, उस रन चेज को कैसे पूरा करना है। बिल्कुल ये समझाते हुए वहाँ पे मोहम्मद सिराज को आशीष नेहरा, क्योंकि आप ओवर अग्रेसिव भी रह सकते हैं। इस तरीके से देवदत्त पडिक्कल आउट हुए थे, अब तक जितना भी रन आया है देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से, शुरुआत में ऐसे नहीं खेले। एक ऊपर है लेकिन कोई नहीं है वहां पे, छक्का मिल जाएगा विराट कोहली को, लेकिन टपेज का फील्डर नहीं है वहां पे। ओवर की समाप्ति। सिराज के लिए चौथा ओवर, मुझे लगता है इसी दिन में पहली बार है। विकेट है नहीं, क्योंकि विकेट सही है। हाँ हाँ रजत पाटीदार कहाँ रुकने वाले हैं? मुझे लगा था कि कौन काढ़ी ना एक दिन नीचे से बॉलर
आप जमाने का कोई ब्रांड नहीं आज की मैच में। जो बल्लेबाज आ रहा है वो शॉट मारने का ही प्रयास कर रहा है, हालांकि बहुत बड़ा चेज नहीं है, फिर भी शॉर्ट बॉल पे कई बार वो फंसे हैं इस आईपीएल में, पर यहाँ पे लंबा छक्का जड़ दिया। वैसे प्लान था शॉर्ट बॉल का और कप्तान अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। ये बेहतर है मेरा मानना, ज्यादा ओवर एक्साइटिंग के चक्कर में जो हार्ड लेन बाउंसर बहुत डाली गई आज की मैच में, जो भी अच्छी बॉल डाल दिया है वो सम्मान दे रहा बल्लेबाज। ये बॉल देखिए, अच्छी बॉल सम्मान दिया, बाउंसर छक्का लगा। विराट कोहली हमेशा उत्तेजित होते हैं, वो बातचीत तो करते रहते हैं, पर ये फ्रेंडली बैंटर नहीं है, कोई ना कोई बातचीत हो रही वहां पे जहाँ पे विराट सीरियस है। शायद सोशल वैसे तो इतना वो बातचीत नहीं करते बल्लेबाजी में, पर यहाँ ये चल रहा कुछ ना कुछ। 100% कोई ना कोई मामलात है जहाँ पे आपस में बयानबाजी पॉइंटली वहां पर बातचीत हुई है। आपको अगर छोटी गेम डालना है तो फिर बाउंसर सही शॉट पे डालेंगे तो फिर एक मौका मिलेगा। जिस तरीके से रबाडा ने डाली थी, लेकिन वहां पे कोई फील्डर नहीं। अगर आप बाउंसर ऐसे डालेंगे तो फिर फाइन लेग होना जरूरी है। शॉट फाइन लेग था, डीप स्क्वायर लेग तेज जा रहे हैं वहां पे रबाडा, और आपका सही लेंथ पे डालेंगे तो फिर मौका बनता है। जी वो 6 ओवर के बाद तो बहुत बेहतर प्लान है, आपको फील्डर पीछे मिल जाते हैं। फाइनल के ऊपर था, बाउंसर पुल किया, विराट कोहली का पुख्ता इरादा, बोला फाइनल पर ये अपने अंदाज में खेलने के भाई मैं बाउंसर करने का प्लान करूंगा। ज्यादा शॉट लेग साइड ही लगाई आज के मैच में। कवर ड्राइव आपको एक भी नहीं दिखा, वो कवर ड्राइव तो वाली बॉल तो डाली नहीं, ज्यादा टांग पे फ्लिक किया, बॉटरमैन का इस्तेमाल किया विराट कोहली आज के मैच में। देखिए सारी शॉट ना आपको लेग साइड दिखेगी, फ्लिक किया, पुल किया, यहाँ भी डाउन द लेग फ्लिक शॉट। बॉटम हैंड के महारथी बल्लेबाज विराट कोहली, एक जमाने से बॉटम हैंड का जो कंट्रोल दिखाया है वो इस मैच में भी दिखा। आईपीएल का फाइनल, 155 का चेज, और यहाँ पे 13 बॉल 36 नाबाद, 2 छक्के जड़ चुके हैं। सवाल तो ये भी उठता है ना कि ये वाली लाइन ट्रैक क्यों थी? यहाँ पे तो आपको टेस्ट मैच रन बॉल डालनी थी, और इसीलिए दोनों पेस बॉलर मुझे लगा आज थोड़ा ज्यादा कैरिड अवे हो गए। और ये तो पैटर्न रहा है विराट कोहली के शॉट मेकिंग, ज्यादातर जो शॉट्स है ऑन साइड में लगाते हैं, और इसके लिए आपके पास बॉलिंग प्लान होना चाहिए तो ऑस्कर बॉस्कर के बाहर वाली लेंथ या फिर बाहर वाली लाइन विद हार्ड लेंथ। टेस्ट मैच लेंथ तो हुआ है जैसे आपने कहा सबा, लेकिन लाइन मुझे लगता है कि लाइन गलत था, स्पेशली विराट कोहली के लिए। अगर आप टेस्ट मैच की लाइन देखे जाए तो शुरू में ज्यादातर उनको ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं, और यहाँ पे आपको एक मौका था स्लिप रख के और बुस्ट लाइन और लेंथ डालने का। अगर शुरू में आउट करना हो विराट को तो फिर आपको एक मौका जरूर वहां पे हो सकता था, लेकिन ज्यादातर सीधे रखे हैं, और नीचे उनका वैगन डील में कितना रन भी आया है, 36 रन आया है, ऑलमोस्ट 36 रन नेक्स्ट साइड पे ही आया। 156 के इस रन चेज में बहुत आगे है इस समय आरसीबी, और सही मायने में डिफेंडिंग चैंपियन की तरह आज ये टीम मैदान में उतरी है। गेंदबाजों ने कमाल किया, और इस रन चेज में 80 पर 2 इस समय अच्छे से बहुत ज्यादा ऊपर। क्या ये वाइड होगी? हाँ वाइड है। कई बार ये भी कई बार होता है कि जब आप कम स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं और आपको पता है कि आप दोनों ही प्राइम बॉलर्स अपनी टीम के लिए, वो कई बार जो आप बॉलिंग प्लान बना कर आते हैं वहां से आप भटक जाते हैं, और आज निश्चित रूप से यही हुआ है दोनों बॉलर्स के साथ। ये पिछले 10 मिनट से दोनों भाईजान बिजी हैं, वो भी ओपनर, दोनों ओपनर, बातचीत हो रही है। बॉल वैसे उस छोर से आ रहा है, पर विराट कोहली इस छोर पे आके बातचीत कर रहे हैं। कितनी बार देखा बातचीत करके वो इंटरव्यू लेके आते हैं, बैठकर होता है, घबराते नहीं है बंदा। 81 के 2 साल के बाद
ड्रैग करते हैं, वो कट नहीं मारते। दोनों बार होल्डर जो आउट किया वो लाइन देखे स्टंप के बाहर है। आज ज्यादा रन लेग साइड पे बनाए हैं। रबाडा निराश हो गए, उनको देखिए 3 ओवर डाले 44 रन खर्चे हैं, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच में। यहाँ सिंगल मिलेगा आराम से, अभी विराट कोहली स्ट्राइक जाएंगे। शुभमन गिल विराट कोहली वो कट नहीं करते, वो बॉल को पुल करना जानते हैं, हार्ड लाइन को पुल करते हैं। वाइड लाइन बेहतर प्लान होगा विराट कोहली के सामने, जो कि आज के मैच में नहीं दिखी है गेंदबाजों द्वारा। सही कहा, ये प्लान और गेम दोनों आरसीबी के हैं। मच बेटर यही देखना था कि विराट कोहली का अप्रोच क्या होगा आज इस बॉलर के सामने। ये पहली बार उसको ब्लॉक किया है विराट ने। कई बार ये भी होता है कि जिस एंगल से बॉल अंदर आती है, एज अ राइट हैंड बैटर आप कई बार टेम्प्ट हो जाते हैं ऑन साइड में खेलने के लिए। अगर बॉल बाहर निकल रही होती है तब आप ज़्यादा तैयार रहते हैं उसको स्टक करने के लिए। क्योंकि जेसन होल्डर वाइड ऑफ द क्रीज जाता है बॉलिंग डालने के लिए, अगर वहां से उनकी लाइन बाहर की तरफ होती है तो फिर आपको लगता है, जब बल्लेबाजी करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा आपके पास ही है, इसलिए ऑन साइड खेलना चाहते हैं, और ऐसे ही आउट किए हैं दोनों बार विराट कोहली को। वाइड ऑफ द क्रीज, थोड़ा सा शॉर्ट गेम आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अच्छी बॉल है, अच्छी बॉल है। और सबके बाहर देखिए दोनों बल्लेबाज इतना अच्छा नहीं खेलते, वो तो लेग साइड खेलना पसंद करते हैं। विराट कोहली कैसा खेले आज की रात इस फाइनल की बात करें, लेकिन थ्रू द कवर्स वहां पे रन्स आपको नहीं दिखेंगे, ना मिड ऑफ पे है ना थर्ड मैन पे है। जितना भी स्कोर किया लेग साइड का इलाका है, मिड विकेट का इलाका, फाइनल लेग का इलाका। गेंदबाज थोड़ा निराश हो गए वहां पे, जो उनकी कमजोरी है मौसम के बाद वहां बॉल कम डाली, पुल किया। अरे गैप पे बॉल है, 4 मिल जाएंगे, शानदार कंट्रोल। यहाँ भी लेग साइड पे चौका मिला है। 88 पे तो आज की बात चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति 88 पर 2। हाफ ओवर के बाद अंपायर का ये इशारा आ गया, सेफ टायर्स और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आरसीबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस समय। IPL 2026 फाइनल की ये कहानी। टाइटन ने बनाए सिर्फ 155 8 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन गेंदबाजी भूवी की, हेजलवुड की और रशीद की। उसके साथ साथ वो कृणाल पांड्या का बहुत ही स्मार्ट एफर्ट, जॉर्ज बटलर का वो विकेट, और उस रन चेज में इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आरसीबी। 88 पर 2, उसमें विराट कोहली द चेज मास्टर एक बार फिर से उसी नजरिए के साथ मैदान में उतरे। पावर प्ले में गति बढ़ाकर शॉट खेलने का प्रयास, और बेहतरीन शॉट खेले ऑन साइड में। वो स्ट्रॉन्ग रिस्ट वर्क, संजय बंगर, जतिन पराग, जतिन शत्रु मेरे साथ में बड़ा जरूरी है। जतिन शत्रु संजय देखते विराट कोहली को देखते हैं शॉट खेलते हुए ना, इनके चेहरे पर जो नूर है वो अलग से नजर आता है। और वो नूर हम लोग के बगल में आके बैठ गया, सोच लो। डोंट माइंड बीइंग अ फॉर्मर सिलेक्टर साहब भाई। ये नूर है तभी तो फिर कोहली नूर है। और अभी ऑफर में और संजय भाई यही बात कर रहे थे, वैगन भी लाया कि विराट कोहली है। आपने एक भी गेंद प्रयास नहीं किया कि ऑफ साइड में थोड़ा उनको फंसाया जाए। बैट्स पकड़ने की कोशिश तो दुनिया कर रही है 18-19 सालों से, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग जोन, वो कलाइयां जिनमें लोहा बहता है, आज कोई आइस पैक शायद ठंडा रख ना पाए। क्योंकि आज ये फाइनल की शामिल एक बार जो अच्छा तक आया, फाइनल में वो कहानी अधूरी रह गई थी। 2016 को वो फाइनल था, सामने सनराइजर्स हैदराबाद थी, लेकिन आज कागिसो रबाडा, ये बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा। विराट कोहली वर्सेस रबाडा। ये लीग स्टेजेस में भी एक ओवर था जहां 5 चौके जड़ दिए थे, लेकिन आज फाइनल की शाम थी। 6 गेंदों में 25, 470 की स्ट्राइक रेट। और भी कुछ खास शॉट्स
तरह से देखेंगे तो काफी खुशी मिली होगी उन्हें, अगर आज चाहेंगे कि वो विनिंग रन्स हासिल करने तक वो क्रीज के ऊपर खड़े रहे, मौजूद रहे, थोड़ा सा अपना खेल भी धीमा कर दिया है पावर प्ले के बाद। पता है कि अभी ये गिरफ्त में आ चुका है, जो भी एक मौका था जीटी के पास, वो इसी तरह के सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम खत्म होते होते वो मौका भी है आरसीबी के पास कि मैच अपने बिल्कुल पाले में लेकर आने का। बस ये टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त हुआ है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ऑरेंज कैप तो वैभव सूर्यवंशी के नाम तय है। 2 लाख तक 630 रन, इकलौता खिलाड़ी जिन्होंने लगातार सीजन 600 से ऊपर रन बनाए और एवोल्यूशन ये नया सीजन बात करेंगे खेलने की, उसमें भी तैयार। जेसन होल्डर के सामने सिंगल्स लिए थे अब आए राशिद खान ऑन ग्राउंड ऑफसाइड पे पहले रन आज की शाम जो 39वां रन है। बहुत ही क्लियर पिक्चर दर्शाता है कि आज जीटी के बॉलर्स जिस हैंड बॉलिंग करनी चाहिए थी वो नहीं। सबसे अच्छी बात इस सीजन मुझे लग रही है वो इनका स्ट्राइक रेट 167 और जो शॉट्स लग रहे हैं ऑन साइड में, हवा में ये शॉट खेला है रजत पाटीदार ने, क्लियर ना नहीं किया, विकेट गिरा रजत पाटीदार का, बिग विकेट क्लियर करने की कोशिश लॉन्ग ऑन को, वहां पर सफलता राशिद खान के नाम और लाइन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी। रजत पाटीदार अपने आप को बैक करते स्पिन के खिलाफ, ये थोड़ी सी धीमी भी डाली गई थी गेंद, बल्लेबाज के आई लाइन के ऊपर वो गेंद थी। राशिद को इस विकेट से काफी खुशी हुई होगी क्योंकि अक्सर बड़े ओवर्स कंसीड करते हैं। ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद खड़े खड़े मारने का प्रयास, बॉल थोड़ा सा धीमा डाला था, वहां पर शॉट जल्दी खेल गए। अगीस और रबाड़ा काफी करीब थे, अपना संतुलन बनाए रखा और ये तीसरी सफलता मिली है जीटी को। थोड़ी सी जान अभी भी बाकी इस मुकाबले में। रजत पाटीदार आउट 15 पे। कृणाल पंड्या पहली गेंद थोड़ी ओवर पिच, पहले रन कृणाल पंड्या के लिए। शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है बैट के साथ, 200 से ऊपर रन, 10 से ऊपर विकेट। बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, 3 टाइटल्स मुंबई इंडियंस के साथ, पिछले सीजन फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, इकलौते खिलाड़ी जो फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और एक बार फिर से मौका है, लेकिन गुजरात टाइटंस राशिद खान स्पेल की शुरुआत में विकेट, विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। आरसीबी जरूर, उनके पास बैटिंग की गहराई है। गुगली पीछे फील्डर, जब तक आखिरी रन नहीं बनते क्रिकेट ने एक ही चीज सिखाई है कि मान के चलना पड़ेगा कि मुकाबला जिंदा है आपके लिए। ये बहुत ही क्रूशियल समय पर विकेट मिला है जीटी को और इस विकेट से थोड़ी बहुत उम्मीदें बढ़ेंगी जीटी के लिए। यहाँ पे ट्रैप किया राशिद खान ने, ये जो मैचअप है उसमें ज्यादा चांस था कि एक और विकेट गिर सकता है। यहाँ पे दूसरा विकेट, ये अनबिलीवेबल टर्न अराउंड यहाँ पर इस मैच में। राशिद खान, ये इस टीम के जादूगर कृणाल पंड्या विराट कोहली से अनुमति मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्टंप्स को जाके लगती मतलब बैट या ग्लव नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। चौथी बार राशिद खान ने शिकार बनाया कृणाल पंड्या को, सिर्फ 2 ही गेंदें चली पारी फाइनल की शाम। कहानी में ट्विस्ट क्या आ सकता है? टाइटंस के फैंस, उनकी उत्सुकता बढ़ती हुई। एक डबल विकेट ओवर और 1 गेंद बाकी है राशिद के पास। पहले ऑफ स्टंप पे आ गए थे और क्या ये डीआरएस ले लेना चाहिए था?
ऐसा लगता है कि बॉल मिस कर जाती, मगर जिस एंगल के साथ विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर पे खड़े थे, उन्हें लगा कि गेंद विकेट पे जाके टकराती। कृणाल पांडे ने जरूर कोशिश करी, मगर मना नहीं पाए विराट को। एक पर आउट, 91 पे 4 आरसीबी। फॉरवर्ड शॉट लेग भी है टिम डेविड के स्वागत में। राशिद खान गए ओवर, संजीवनी का काम कर गए गुजरात टाइटंस के लिए 9 समाप्त। जेसन होल्डर, जिन्होंने मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करके रखा है, लेकिन ये दिशाहीन गेंद आसानी से उसे फाइन लेग बाउंड्री का रास्ता दिखाया विराट कोहली ने। इजी पिकिंग्स। पिछले ओवर में 2 विकेट लिया था राशिद खान ने। ये फर्स्ट ऑफ डिलीवरी, आप इस तरह से डिलीवरी डाल ही नहीं सकते हैं। इतने कम स्कोर को जो आप डिफेंड कर रहे हैं, एक मौका मिला है आपको, एक लाइफ लाइन दी गई है। यहाँ पे हर एक रन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। यहाँ से अगर 20-25 रन और बन गए, इस जोड़ी ने जोड़ दिए, तो फिर सोचिए कि मैच खत्म हो गया। मात्र तरीका है विकेट्स गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि वहां पे लाइन मिली, विराट कोहली ने उसको दिशा दिखाई। टिम डेविड आए, 178 की स्ट्राइक रेट, जो 8 अलग अलग खिलाड़ी पेयर तो मैच बने, उसमें टिम डेविड भी शामिल। ये रिव्यू कर लेना चाहिए था, क्योंकि बॉल जो है कहां पर इम्पैक्ट तो चलो लाइन में था, और गेंद जी नहीं, ये लेग स्पिन दिखाया है, और लेग स्पिन के ऊपर काफी दारोमदार रहा है राशिद का। फुल शॉट, पीछे फील्डर और राशिद खान, क्विक फील्ड तैयार, किस एंड पे भागना चाहते हैं, भाग के देखिए। एक कंपैरेटर है, अभी अभी 2 विकेटें मिली है, राशिद खान तैयार है इस कॉन्टेस्ट के लिए। पीछे विराट, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत याराना है दोनों के बीच में, और दोनों को जीतना उतना ही पसंद भी है। तो 2 बार आउट कर चुके हैं। वो बाउंड्री जो लगाई, एक लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, पिछले ओवर में 2 सिंगल्स लिए थे। टिम डेविड के क्या विचार है? अगर जेसन होल्डर के पास वो थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है, तो वो अतिरिक्त कद भी है टिम डेविड का। होल्डर, और ये अलग तरीके से खेलना होगा यहाँ पर टिम डेविड को, क्योंकि इस मैच उस जोन में आ चुका है जो आप याद दिला रहे थे जतिन ने, 2016 वो फाइनल। आने उसकी तरफ टाटा एआईजी फैन बॉक्स मैच के रोमांच को और बढ़ा रहा है। क्रिकेट भले ही अनिश्चित हो, लेकिन टाटा एआईजी के साथ आपकी सुरक्षा हमेशा पक्की है, क्योंकि टाटा एआईजी है तो भरोसा है। 2016 में भी फैंस का ये भरोसा था कि 140 में एक ही विकेट गिरी है। 209 का वो लक्ष्य था हैदराबाद के सामने। सारे दिग्गज थे, ओपनर्स क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी वॉटसन, लेकिन वो मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था। लेकिन टिम डेविड के मंसूबे अलग हैं। मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच का वो गैप, जिसके साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बोर्ड पे 100 का आंकड़ा भी। इस लंबे कद के खिलाड़ी को आप इस बाउंड से कैसे बीट कर सकते हैं, जबकि गति भी ज्यादा नहीं है।
अब उनका फेवरेट स्कोरिंग एरिया है, उस गैप को पियर्स करना लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से, वो बल का सही इस्तेमाल, बॉटम हैंड इन प्ले और बहुत ही कंट्रोल शॉट खेला है। इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं, 2 चौका। इस बाउंसर के साथ ओवर समाप्त, 100 पे 4। राशिद खान बैकफुट से पुश किया है, शॉट कवर के फील्डर को भेद के दूसरे रन के लिए स्प्रिंट लगाते हुए दोनों एंड्स पे डायरेक्ट हिट है टिम डेविड। क्या पूरा स्ट्रेच आउट किया या नहीं? क्या अंत में टिम डेविड ने माना कि पहुंच जाएंगे आसानी से बड़ी स्ट्राइक्स के साथ? सेफ है, पहुंच गए अपनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स पे विश्वास टिम डेविड को। करें तो बढ़ गई थी वहाँ आरसीबी फैंस की, क्योंकि एक तरह से बहुत ही कैजुअली भाग रहे थे। ओह इनसाइड, आप पहुंच गए, हाइट का फायदा। यहाँ पे विराट कोहली का रोल काफी अहम होने वाला है। अब साझेदारी बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे बल्लेबाज जो रहेंगे उनको वो शॉट खेलने के ऊपर कहेंगे कि आप शॉट खेलिए। इनको आखिर तक रहना काफी जरूरी, वो विनिंग रन्स लेने के लिए। हैव एन अंपायर रिव्यू फॉर अ रन आउट एट द बॉलर्स एंड। गिव मी द बेस्ट साइड ऑन एंगल प्लीज। Bats grounded. Thank you. I am ready with my decision for the big screen. चलिए एक बार फिर से आरसीबी फैंस को मौका मिला खुश होने का। अंदेशा की गुगली आएगी, पढ़ के बैकफुट से और कलाइयों का उपयोग आसानी से टहलते टहलते इस रन को पूरा किया। ये विराट कोहली का स्पेस है, यहाँ से मैच को जिताना, ये इन्होंने बार बार किया है। अब इनको वो ऐवान हो गया है कि यहाँ से अगर आप सेंसिबल बैटिंग करेंगे तो आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं। और जिस तरह से रन बनाए हैं पिछले 2-3 ओवरों में, अब वो नजर आने लगा है। रुपये ऑन द गो फॉर द मैच। 6 आ चुके हैं विराट कोहली के बैट से, साथ में जोड़ दीजिए 2 बड़ी हिट्स भी। उंगली थी और राशिद खान को लगा थोड़ी और घूमती, गैप था बैट और पैड के बीच में, उसको भेजने का प्रयास। लेग स्पिन होती देखी, एक स्लिप देना आता है, फॉरवर्ड शॉट लेग देना आता है। पिछला ओवर राशिद खान का, रजत पाटीदार की विकेट, उसके बाद कृणाल पांड्या। गूगली विराट कोहली ने सिंगल लिया और दूसरी गेंद जो कृणाल पांड्या ने खेली उसी पे नाम लिखा था। बैकफुट से अच्छा पुश किया है, बड़ा भरसक प्रयास वॉशिंगटन सुंदर द्वारा। रशीद खान थे वहां पर, जिस तरह से अपने दाहिनी तरफ काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां, और पूरी तरह से हर एक रन का महत्व जानते हैं। वो चीजें मुश्किल बनानी है यहाँ से आरसीबी के लिए। एक 105 पे 4।
चाहिए 56 गेंदों में, थोड़ा सेंचुरी टाइम आउट। 23 गेंदों में 48 पे विराट कोहली। टिम डेविड रन बॉल, राशिद खान को इंतजार अगली गेंद का, थोड़ा सा गैप बने, उसके बीच में से गुगली निकले या नहीं। संजय बांगर सभा करी में इस टाइम आउट में हम यही चर्चा कर रहे थे और याद करने की कोशिश कर रहे थे, विराट कोहली के लिए फिजियो या डॉक्टर कभी मैदान पे बहुत कम ही देखा है। आज की ये पारी जिसमें 39वां रन ऑफ साइड पे आया था, उसके पहले ऑन साइड पे रन का स्विच ऑन था। इसमें भी एक शॉट मिला रबाडा को ऑफ द फ्रंट फुट, वो फ्लिक इनटू द स्टैंड्स एंड जॉर्ज जाते। मुझे लगता है वो एक ऐसा एरिया जहां बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो स्कोरिंग पैटर्न में परिवर्तन लाने के लिए विराट ने, और वो जो स्ट्राइक रेट है उसको और एक्सेलरेट करने के लिए, और वो नजर आया है इस पूरे सीजन में। तो पीछे मुड़ के देखेंगे जीटी, यहाँ पर एक और बार वो करीबी मामला टेस्ट कर रहे हैं राशिद। आज लय हासिल कर लिए उन्होंने, यही कोई मैजिक स्पेल की यहाँ पर जरूरत है जीटी के लिए, तो वो आज की रात, आज बहुत ही कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करी है उस लेंथ के ऊपर। 21 विकेट, हल्की सी एक आवाज थी कैच की, लेकिन स्लिप से बहुत दूर थी। बाउंड्री मिलेगी। राशिद जानते हैं कॉन्टेस्ट खूब चला, टिम डेविड भी जानते थे खतरा बहुत बड़ा, लेकिन बाउंड्री के साथ समाप्त हुआ है 11वां ओवर 109 पे 4। रशद खान आया 12वें ओवर में, हाथों से खेला विराट कोहली। अब 24 गेंदें 48, 26 पे आई है इनकी सबसे तेज आईपीएल की 50, वाई थी दिल्ली कैपिटल्स के सामने। सियरा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर, जो आए थे बतौर एक फ्रीलांसर एज एन इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे गया परमानेंट बन गए और अपना काम कर गए। 200 की स्ट्राइक रेट विराट कोहली। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग क्रिकेट की तरह हर गेम छक्का नहीं होती, लेकिन धैर्य मैच जिताता है। फील्डर से दूर, आ जाओ स्ट्राइक रेट के दीवानों, फाइनल की शाम किंग मूड में आया है। आईपीएल की पहली तारीख से 19वें सीजन की आखिरी तारीख तक जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है विराट कोहली, इवॉल्व करने को तैयार है विराट कोहली। सबसे तेज आईपीएल 50 विराट कोहली के लिए आज फाइनल की शाम। जबरदस्त पारी, फ्लॉलेस पारी, और जिस तरह से टी20 बैटिंग इवॉल्व कर रही है इस सीजन, यही देखा है हम लोगों ने विराट कोहली के साथ भी। हवा में ये शॉट पर सेफ, 1 बाउंस। ये जो अर्धशतक पूरा किया इस फाइनल मुकाबले में, और सही मायने में अपने गेम को बदला है विराट ने। लेग साइड को काफी आज प्रेफर किया है विराट कोहली ने, क्योंकि गेंदें जो है मिडिल स्टंप लेग स्टैंड की तरफ ज्यादा डाली है। अगर आज ये खुशी देकर जाएगा अर्धशतक, और वो खुशी को और बेहतर करने के लिए अपने आप को जरूर उस जोन में डाल रहे होंगे कि मुझे आखिर तक रहना, वो विनिंग हिट तक वहां पर शामिल रहना है। डबल अच्छे से किया था गेंद में, लेकिन एकदम पीछे वही फील्डर तैनात। क्या ये पारी रही है, एक छोटा लक्ष्य की तलाश में रबाडा और मोहम्मद सिराज कोशिश कर रहे थे वो फ्रंट पैड को मारे, मगर ये कहाँ रुकने वाले। वो इंपीरियस बॉटम हैंड निकाला, फुल शॉट अच्छे तरीके से खेले, और प्रेफर किया है एक प्रदर्शनी दिखाने का ऑनसाइड के खेल की। बहुत बार हम उनके ऑफसाइड के खेल का बात करते हैं, मगर जब शुरुआत करी थी उन्होंने अपने करियर की, तो गेंदबाज यही गेंदबाजी करते थे मिडिल स्टंप पे, तो फिर मिडिल स्टंप से काफी बार
वो फ्लिक करके ऑन साइड के ऊपर खूब रन बटोरे थे, उससे बचने के लिए लाइन बदल गई थी, मगर शायद आज गुजरात टाइटंस के बॉलर से चूक हो गई, क्योंकि मजबूत पक्ष में उन्होंने काफी गेंदें डाल दी। हल्के हाथों से सिंगल टीम दे रहे, पहुंच जाएंगे। दबाव डाला वहां वॉशिंगटन सुंदर पे। 7 रन अर्शद के पहले ओवर से 116 पे 4। चालीस रन दूर, सिर्फ 40 रन दूर, बैक टू बैक चैंपियनशिप से। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, तो ऐसी टीमें जिन्हें यह सम्मान हासिल हुआ है, ट्रॉफी उठाना और फिर उसे डिफेंड करके बताना। समस्याएं खूब सारी इस सीजन से पहले, कहां खेलेंगे, क्या घर पे खेलेंगे, क्या पुणे में या सिर्फ रायपुर में, क्या फाइनल घर पे खेलने का वो मौका मिलेगा या नहीं, आप अहमदाबाद में खेलेंगे, उसी सरजमीन पे जहां पे 3 जून 2025 को ऐतिहासिक बनाया था। विराट कोहली का 18 साल का संकल्प, संघर्ष और संयम एक ट्रॉफी में तब्दील होता हुआ नजर आया था। रजत पाटीदार एक रिप्लेसमेंट प्लेयर से लेके एक टाइटल विनिंग कप्तान तक का सफर, और अब मौका रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान कप्तानों की फहरिस्त में खुद का नाम जोड़ने का, शामिल करने का। रास्ते में खड़े हुए विराट कोहली और उनका चेज मास्टर का रिकॉर्ड गुजरात के सामने। राशिद खान दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग विकेट्स पे विकेट्स चहकाए, टीमों को मैच में वापस लेके आए। आज भी 2 सफलता उनके नाम आई है, लेकिन रजत पाटीदार एक खिलाड़ी स्पेशल है। इसने प्लेऑफ्स में कई बार दिखाया, इंक्लूडिंग जो क्वालिफायर 1 में कर दिखाया। लगभग अकेले दम पे मैच का रुख, मैच के सूरत हाल पलट के रख दी, और उसके अलावा फील्ड पे वो कप्तानी। एक और चीज जो उभर के आई थी तो जब इनका कप्तानी का ऑडिशन चल रहा था संजय भाई, वो यही कि तेज गेंदबाजों के दम पे अपनी एक टीम खड़ी करना चाहते थे। बैटिंग में समस्या नहीं, ड्रेसिंग रूम पे ध्यान नहीं, ध्यान सिर्फ उस तेज गेंदबाजी पे। इन द एयर ये शॉट, नो छक्का, फ्लैट शॉट, थोड़ा मौका बना था रबाडा के लिए, कोशिश पूरी की, पर उनके ऊपर से ये शॉट लगाया मैक्सिमम। वहां पर मौका जरूर था, ऊंचे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। हाफ ट्रैकर गेंद बल्ले के निचले हिस्से में ज्यादा लगी, बीचों बीच लगी नहीं, थोड़ा सा ही दूर रह गए। तो विकेट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर राशिद खान। 33 रन, 45 गेंदे। रन मिलेगा यहाँ पे। रजत पाटीदार की अब बात कर रहे थे उनकी कप्तानी की। 27 मैच, 19 जीत, 8 हार। इस 19वें सीजन के आखिरी मुकाबले में 20 जीत के जरिए खुद को एक बड़ी एलीट लिस्ट में लाके खड़ा कर सकते। बहुत शानदार कप्तानी की है। ये एक ऐसा कप्तान है जो इंप्रेशन देता है अपने सभी खिलाड़ियों को कि वो कंट्रोल में है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक कप्तान के लिए। आपने अगर ये एश्योरेंस दे दिया डगआउट में भी और मैदान के अंदर भी कि एज ए कैप्टन मुझे पता है मुझे कौन कौन से मूव्स करने हैं, और ये पूरे सीजन में नजर आया है। तो क्रिटिकल मोमेंट्स को कंट्रोल में करना, उस पर कब्जा करना, आज भी जिस तरह से वो बॉलिंग चेंजेस हमें देखने को मिले, जॉर्ज हेजलवुड को वापस लेकर आना, भूवी को वापस लेकर आना,
ये भी शॉर्ट डिलीवरी और गुड वर्क वहां पे। 13 ओवर समाप्त, 126 पे 4। टाइम आउट का इशारा आ गया, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 1-2-6 for 4 RCB। बल्लेबाजी का न्योता दिया शुभमन गिल के टाइटंस को 155 बनाए। उसमें वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतक की जरूरत पड़ी। उनका तीसरा IPL के उनके करियर में 126 पे 4 फिलहाल। 56 रन नाबाद इन 30 गेंदों में। तो सांसें चल रही हैं, थोड़ी जान में जान आई है क्योंकि वो अर्धशतक बनाया एक बार फिर से। नंबर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करके हल्का सा ऐलान किया था, उस ऐलान को प्लान में तब्दील किया है। लगातार 4 सीजन 600 या उससे ज्यादा रन, अर्धशतक और बल्ला उठाने की वो आदत और थोड़ी सी मुश्किल में भी नजर आए टाइम आउट के दौरान। लेकिन पता है कि बिल्कुल जीत की दहलीज पे ला खड़ा किया एक बार फिर से उसी टीम को जिसकी पोशाक पहली बार पहनी थी 2008 में उस इनॉग्रल सीजन में। इसी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त होता हुआ अहमदाबाद में। चलिए गूगल सर्च का लाइव ऑप्शन आजमाते हैं और पूछते हैं 1 से 10 के स्केल पर आज दूसरी पारी में ओस का कितना असर पड़ेगा। आप अपने कैमरास पे भी देख ही सकते हैं, लेकिन यू ईटर बता रहा है 1 out of 10। फेयर पॉइंट। गूगल सर्च पर आज ही लाइव सवाल पूछकर देखिए। गूगल सर्च का नया लाइव ऑप्शन आजमाएं और वीडियो या वॉइस के जरिए अपने सवाल पूछिए। सवाल पूछे गए जब राशिद खान के वो 2 विकेट आए, लेकिन फिर अचानक थोड़ी सी राहत की सांस RCB फैंस के लिए। टिम डेविड 19 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। एक्चुअली बेस्ट एवर सीजन उनका भी रहा है बैट के साथ। याद दिला दें RCB के साथ पहली बार IPL खेला था और फिर मुंबई का रुख किया था। सिंगल के साथ थोड़े लड़खड़ाते हुए विराट कोहली स्ट्राइक पे आएंगे। संजय माजरा गए वहां पर भी काफी बातचीत एनिमेटेड। जरूर थोड़ी सी परेशानी है, ये लंबा सीजन रहा है और टेस्ट किया है अपने फिटनेस को, और क्योंकि वो उस लेवल पे खेलते हैं, इंटेंसिटी पे खेलते हैं, अपने आप को पुश जरूर कर रहे, कंफर्ट जोन में होते नहीं है। करियर की सबसे अगर तेज 50 लगाया है आज, तो फिर वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर ही निकले। दिक्कत के बावजूद वो जरूर चाहेंगे कि वो विनिंग रन्स लगाने के लिए वो वहां पर खड़े रहे। बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं। आज थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें मिली नहीं है। उम्मीद थी कि होल्डर उस तरह की लाइन डालेंगे, मगर वो भी आज चूक बैठे। सही बात कही यहाँ पे संजय ने कि वो जो मैच को जिताने की जो ललक है, वो अंतिम समय तक मैदान पर रहना, मैच जिताना, उसकी जो कोशिश रहती है हमेशा विराट कोहली
पिछले सीजन इंतजार का था। ये शोर इस सीजन ललकार का बनता जा रहा है। एक और बाउंड्री, 4 रन और कम उस लक्ष्य से अब आरसीबी। शॉर्ट बॉल की लाइन तो काफी अच्छी थी अर्शद की तरफ से, मगर काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी है टिम डेविड। देखिए उछाल हासिल किया था मगर अपने आप को जगह दी, लेग स्टंप के बाहर भी गए और फ्लैट बैट कर दिया है वाइड मिड ऑफ के ऊपर से। ये खास शॉट है, टेनिस में अक्सर हम ये शॉट देखते हैं। फोरहैंड क्रॉस कोर्ट, भुवनेश्वर कुमार आईपीएल टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट बॉल्स में 11 डॉट बॉल डाल के इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। 209 पेड़ लगा दिए। बिग मैच 19/11। क्या एज है, क्या बल्ले का किनारा है अर्शद के मिड से। रिव्यू तो उपलब्ध है तो जाया क्यों करना, और तमन्ना दिल में ना रह जाए इसलिए यूज कर लिया है 1 डेसिमल DRS। We have a clear review for a caught behind. Original decision is not on. I checked the field, it's a fine delivery. Front on, please. Ball is passing close to the outside edge. Can you have ultra edge to confirm, please? There's a clear spike when the ball is next to the bat. Satisfied bat involved. If you need to reverse your decision, you're on screen. Signal out. हल्का सा ट्विस्ट कहानी में बल्ले से एज निकाला था और टिम डेविड का विकेट मिल चुका है। आधे बैटर्स डगआउट में, लग ज्यादा दूर नहीं है लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की किरण टाइटंस के लिए। अर्शद खान की गेंदबाजी के दम पे और बटलर के उस कैच से डेविड चले 24 पे। जितेश की एंट्री, ओवर नंबर 15 की शुरुआत। जितने रन टिम डेविड ने बनाए उतने ही रन अब आरसीबी को चाहिए अपने दूसरे टाइटल के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा को अब लाया गया है। कुछ ऐसी कहानी थी सीजन के पहले मुकाबले में, लगभग एंट्री पॉइंट ऐसा ही था। 16 विकेट है लेकिन थोड़ा सा इन एंड आउट वाला मामला रहा है सीजन। इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा और जनरली वही स्वॉप रहता है। या हल्की सी उम्मीद की किरण अभी भी है गुजरात टाइटंस के लिए। सिर्फ सहलाया है गेंद को, सिंगल के साथ जितेश को लेके आएंगे स्ट्राइक पे पहली बार इस मुकाबले में। अंडर लाइट्स इन अहमदाबाद, वही सरजमी, वही शहर, वही पिच। जितेश शर्मा 1000 से ज्यादा रन। तो कप्तानी भी की एक बार फिर से। पिछले सीजन जब कप्तानी की थी तो क्या कमाल की कप्तानी पारी खेली थी लखनऊ के खिलाफ। टॉप 2 को सीमेंट किया था आरसीबी ने। एक और मौका एक मैच फिनिश करने का। टिम डेविड, रात की सांस वाली साझेदारी थी ये सचिन। छोटी छोटी साझेदारी चाहिए थी आज और उस तरह से चला है पारी। फिर अब अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे एक स्लिप अप। स्लिप का फील्डर वहां पर मौजूद, वो बाहरी किनारा ढूंढने का प्रयास। अक्सर वो शॉर्ट बॉल काम में आती है जितेश के खिलाफ। ये उस पल के कुछ खास क्षण जब पहली बार
जीत क्या होती है ये महसूस किया था आरसीबी की टीम ने, और जो लंबा इंतजार था उसे खत्म होते हुए देखा था करोड़ों फैंस ने आरसीबी के। जिस शहर, जिस मैदान, जिस पिच पे समय के पहिए को आखिरकार अपने हित में झुकाया था, जहां 18 साल का संयम, संकल्प और संघर्ष सफलता में तब्दील होता हुआ नजर आया था। पिछली बार वो गूंज इंतजार की थी, इस बार शोर ललकार का होगा। उम्मीद यही होगी आरसीबी फैंस को। खूबसूरत शॉट, फुल फेस ऑफ द बैट, गैप ढूंढ निकाला दोनों फील्डर्स के बीच में, थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड लगाई भी थी। विकेट की तलाश में खामियाजा इस चौके के बलबूते। पहले कवर कर दिया था ऑफ स्टंप को, काफी अक्रॉस द स्टंप्स आ गए थे, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, और उसके कारण वो लाइन को बढ़िया तरीके से कवर करके वो गैप को ढूंढा। मिड ऑफ का फील्डर काफी सीधा, तो जो गैप था उसे बहुत ही बढ़िया अंदाज में वहां पर ढूंढा जितेश ने। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ढूंढ के देखी अपने सीजन को संजय, पहले 2 मुकाबलों में जीत नहीं आई, थोड़ा सा भाग्य का साथ रहा, थोड़ी सी इनडिसीजन, जिसमें तीसरे मुकाबले में आखिरकार वो पहला W, वो पहले 2 पॉइंट्स हासिल किए। सीजन का पहला हाफ 7 मैच से 3 जीत, फिर एक गजब का पलटवार। हाँ रूल है ऊपर। शुभमन गिल की कप्तानी में प्लेऑफ्स का रास्ता तो पिछली बार भी तय किया था, लेकिन फाइनल का रास्ता इस बार तय किया है। याद दिला दूं, ये वही साल है जहां पे शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन थे T20 इंटरनेशनल टीम के, तो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह नहीं ढूंढ पाए थे। उसके बाद ये 700 प्लस रनों का सीजन, उसके बाद ये फाइनल तक का सफर बतौर कप्तान, अच्छा संकेत इनके लिए, इनके फ्रेंचाइज के लिए, जो 5 सीजन्स में 4 प्लेऑफ की एंट्री लेके आया है, और ऑब्वियसली ये तीसरा फाइनल। स्टैंड आउट पार्ट रहा है वो गेंदबाजी गुजरात टाइटंस के लिए, जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने, कगिसो रबाड़ा ने कई साल के बाद वो रुतबा दोबारा से स्थापित किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। खौफ था एक समय, खौफ दोबारा से हमने यहाँ पर देखा हुआ है। पूरे इस सत्र में गजब की गेंदबाजी उनके तरफ से हुई। 140 पे 5। ओवर बाकी, 5 विकेट इन हैंड, 17 रन। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता है भी नहीं, पूरी तरीके से पाले में गेंद है। और अब तक विराट है, तब तक ये औपचारिकता महज है। सिलसिला जहां पे खत्म हुआ था, तो लगता है कारवां वहीं से चल सकता है एक बार फिर से आरसीबी का। ईसाला कप नंबर 2 से ईसाला कप नंबर 2 तक का सफर तय करना है, तो 17 रन और बना दीजिए। इस सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े मैच विनर, सबसे परिचित, सबसे पॉपुलर खिलाड़ी मोर्चा संभालते हुए, मंच को एक बार फिर से अपना बनाते हुए, सिर्फ कलाइयों की कला एक बार फिर से दिखाइए। क्या ढूंढ निकाला, आरसीबी को थोड़ा सा और नजदीक लाके बताया है। दोबारा से वो लाइन में चूक, रशद लेग स्टंप के बाहर वो पिच हुई गेंद, और फिनिश भी लेग स्टंप पे ही हो रही थी। बहुत फाइन खेला, फील्ड की बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी अक्सर उन्हें होती भी है। फाइन लेग के इलाके में आज कई चौके हमें देखने को मिले। दो टाइटल्स विमेंस टीम के,
अब दूसरे टाइटल के थोड़ा सा और करीब, और शुरुआत इसी मैदान से हुई थी 3 जून 2025 वो ऐतिहासिक शाम, वो रात जहां पे इंतजार तो खत्म हुआ ही था, उसके साथ साथ वो भावनाओं का सैलाब जो उमड़ा था, तो चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरी थी। 18 साल लंबा समय होता है, ये तब जिया था और आज एक बार फिर से जीने की तमन्ना के साथ इस मैदान पे आए। एबी डिविलियर्स तब भी वहां थे, आज भी यही है। नर्वसनेस तब भी कुछ ऐसी थी, भले ही लक्ष्य से 12 रन दूर हो और विराट कोहली अभी भी हो, लेकिन एंजाइटी अभी भी उतनी है। पीयूष, आप चाहते हैं कि विराट कोहली जिस तरीके की पारी खेल रहे हैं तो मुकाबला खत्म करके ही आएंगे, चेज मास्टर ऐसे ही कहलाते हैं वो। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लेंथ, मैच से जस्ट पहले ये दिलो धड़कन आरसीबी की इतने साल, थोड़ी सी मुलाकात, कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आज हमारे पोस्ट मैच शो में हमारे साथ होंगे एबी डिविलियर्स। हैरानी नहीं कि वो आरसीबी की जर्सी एक बार फिर से पहन ले। इतने साल आपने इतने मैच खेले, इतने मैच जिताए, अकेले दम पे कई बार तकदीर तय की है इस टीम की। ऐसा किस्मत का भी अन्याय है कि एज अ प्लेयर वो चैंपियन बनने का सम्मान हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक चैंपियन खिलाड़ी से कम नहीं। खिलाड़ी के लिए इनको आप जिस टीम के लिए इतने साल खेले होते हैं और जैसा खेले तो कप ना आना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण जरूर रहा, लेकिन पिछले 2 साल जिस तरीके की क्रिकेट खेली आरसीबी ने, एबी डिविलियर्स वो भावनाएं नजर आती हुई। हवा में गया ये शॉट, शुभमन गिल क्लेम कर रहे हैं कैच। क्या किंग का कैच प्रिंस ने पकड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा डिले और दिया है। विराट कह रहे हैं शायद ये बाउंस होके गई है हाथों में, अभी तक पूरी तरीके से कन्विंस नहीं, और ना ही कन्विंस है अहमदाबाद में बैठे हुए आरसीबी के फैंस। ये चेक किया जाएगा। वहां पे शुभमन गिल ने तो मान लिया कि उन्होंने कैच क्लियरली पकड़ा है, लेकिन विराट कोहली का मानना बिल्कुल उसके ऑपोजिट की गेंद चेक तक का था। बैकग्राउंड चेक वहां पे कर चुके हैं अंपायर, और अब नितिन मेनन वहां पे कहते हैं कि आप रुक जाइए। बहुत सारी वहां पे चर्चाएं चलती हुई, काफी सारा कंफ्यूजन। हाँ बोलो। हाँ तो कही दो 3-4 मिनट। देखने के लिए कि क्या वो उंगलियां गेंद के बिल्कुल नीचे है, क्या पूरी तरीके से नियंत्रण में थे कप्तान शुभमन गिल। एनीथिंग फ्रॉम बिहाइंड फॉर मी? डाइविंग फॉरवर्ड नेवर इजी। अगर पकड़ लिया तो बहुत उम्दा, बहुत आला है। जस्ट टेक इट बैक प्लीज। आई कैन सी द फिंगर्स ऑन द साइड ऑफ द बॉल and some part of the ball is touching the ground. Can you just rock and roll that for me, please? Take it a few frames back and rock and roll that for me, please. Yeah. The ball is touching the ground between the fingers there. Satisfied. I'm ready with my decision for the big screen. कोशिश पूरी शुभमन गिल की, लेकिन कप्तान का वो कैच माना नहीं जाएगा। कोहली के लिए एक और मौका आएगा, जीत की दहलीज के पार अपने फेवरेट टीम को, अपने फेवरेट फैन बेस के साथ
ये गूगली जो बहुत घूमी, स्क्वायर लेग फाइन लेग की तरह देख रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी खेल बैठे कि उत्सुक थे राशिद, शॉर्ट लेग पे फील्डर। स्पिन की बात कर रहे हैं, सबसे सफल स्पिनर रहे हैं इस सीजन राशिद खान। पीयूष हमारे साथ मौजूद। रन्स की कहानी है ना पीयूष, आज के गेंदबाजों की तरफ आप देखेंगे नहीं उतना जब से 155 बने हो। कम से कम मेरा मानना है कि वहाँ पे 35 से 40 रन शॉर्ट थे, 15-20 रन 25 रन शॉर्ट हुआ करते हैं। बल्लेबाजी आज तो मानना होगा कि बहुत साधारण स्तर की नहीं, क्योंकि जिस तरीके से डिस्कसर्स हुए वो वैसी गेंदें थी नहीं आउट होने वाली। लेकिन बेबान को बात करते हैं फाइनल, वो बड़ा मुकाबला, उसका प्रेशर, और वो दिखाई दिया भी। कई बार ऐसे शॉट्स आपको लगता है कि आप शायद स्कोर कार्ड में पीछे रह गए और उस रन गति को बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन ये खेमा पिछला सीजन जो टाइटल जीता, 18 सालों का इंतजार किया, ये टीम सिर्फ वो एक टाइटल के लिए नहीं बनाई, ये बात एकदम स्पष्ट है। तो दो टीम्स हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में अपने टाइटल को डिफेंड किया है। 2010 के बाद 11 में डिफेंड किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, हमने फाइनल में आरसीबी लिया। उसके बाद 2019 के बाद पहली बार इवन साल 2020 में मुंबई इंडियंस ने जीता था, और इन दो टीम्स की विरासत रही है। बीच में कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने 3 टाइटल्स अपने नाम किए। विद द टर्न, पीछे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद। 10 टीम्स के बीच का सीजन, और इसमें कोई ट्विस्ट या टर्न नहीं आया आरसीबी के लिए। अगर आप देखिए जिन भी स्थितियों में खेले हैं, जिन भी परिस्थितियों में खेले हैं, टीम उसके लिए तैयार थी। लेकिन कई बार होता है टीम, जैसे अगर गुजरात की बात करें, वो अच्छे विकेट वहाँ जहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद, खास करके तेज गेंदबाजों के लिए, वहाँ पे वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। 17 समय स्ट्राइक पे 18 नंबर की जर्सी। थोड़ी थोड़ी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, बस इंतजार कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप की फहरिस्त में आगे निकले। कगिसो रबाडा एक विकेट के साथ, लेकिन 2016 और 17 के बाद एक दशक के बाद फिर से पीक करना। ढेर सारी हीरोज, नायक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस कैंपेन में। मोहम्मद का भी स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। आप रहे भी टीम्स के साथ, और जब सोच होती है, हमने वो बात की बात करी जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आए, एंडी फ्लावर आए, एक थॉट इंस्पायर्ड डिसीजन कप्तानी का पीछे मुड़ के याद रखा जाता है रोहित शर्मा के रूप में। मिड सीजन वो चेंज किया था मुंबई इंडियंस ने, वहां से चीजें बदली। रजत पाटीदार इंजरी रिप्लेसमेंट, उसके बाद एलिमिनेट में शतक, उसके बाद चोटिल, रजत पाटीदार को कप्तान बनाना, ये आरसीबी के इतिहास में शायद उसी तरीके से, उसी नजरिए से देखा जाएगा इस फैसले को। वो नए युग की शुरुआत थी। डोमेस्टिक में अच्छी कप्तानी करके उनको वहां से पिक किया, और उसके बाद बतौर कैप्टन शानदार काम किया लास्ट ईयर। बल्लेबाजी टीम तो थी आरसीबी, पर कप्तान के साथ गेंदबाजी का जो चयन किया है, आपने एंडी फ्लावर का नाम लिया, दिनेश कार्तिक वहां मौजूद है। टामनेस की पहचान है ये अच्छे कप्तान की कप्तानी की कला आप डोमेस्टिक में सीख के आते हो। 32 साल के हैं, बहुत ज्यादा खेल के इनको कप्तान बनाया गया। बल्ला भी चला इनका, कप्तानी शानदार करी। आपने जिन्हें चेहरा देखना, बिल्कुल उनको पता है एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इस वाइड बॉल में, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में कैसे अपने गेंदबाज के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना होता है।
आरसीबी कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बहुत बड़ी टीम। फैन बेस की बात करें, दबाव होता हमेशा, पर उनके सामने जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल दिखाया कप्तानी में लास्ट ईयर, यहाँ भी इस साल काबिले तारीफ। तो नीचे देखें आज, ये आज की तस्वीरें, रजत पाटीदार की ये ताकत है कि आज में जीते। कल जब सवाल पूछा गया था कि जल्द भारतीय टीम का भी चयन होना है, आपका परफॉर्मेंस वैसा रहा है, क्या उस तरफ भी सोच जाती है? उन्होंने कहा नहीं, बहुत उतार चढ़ाव देखे, मैं आज में जीता हूँ। आएगा अगर वो फैसला, बहुत अच्छा होगा, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। और एक ऐसी टीम है जहां पे इतने बड़े बड़े धुरंधर नाम खेले हैं, विराट कोहली आज भी मौजूद है, किस तरीके से आप उस टीम को चलाते हैं, कहाँ कितनी सीनियर से बात करनी है, कहाँ नहीं करनी, उस पूरे सीजन देखने को मिला है, येट ही इज बीन डोमिनेटिंग। मेरा मानना ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं, और जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं वो अब ढूंढेंगे कप्तानी कौन करना जानता है डोमेस्टिक में। वो ब्रांड के पीछे नहीं भागना, ब्रांड का मतलब वो नहीं कि वो कप्तानी आती हो, वो काम जो गलती फ्रेंचाइज ने की है, शायद इनको देख के वो एहसास भी होगा कि डोमेस्टिक में जो लगातार कप्तानी करना जानता है उसको प्रमोट करो। और अभी तो यहाँ पे सिर्फ औपचारिकताएं मात्र रह गई है, सिंगल सिंगल से काम चलाते हुए, क्योंकि जरूरत नहीं है ना वो बड़ा शॉट खेलने की। विराट कोहली तो वो बल्लेबाजी खत्म होती है पारी की, तो वो नाम के आगे बिंदु बहुत ज्यादा पसंद है, नॉट आउट जाना बहुत पसंद। उसी अंदाज में आज ये पारी भी चलाई थी, पावर प्ले में डोमिनेट किया था। आप जानते हैं जब 155 160 का लक्ष्य होता है तो आप चाहते हैं कि वो टीम पावर प्ले भी क्लोज कर दे, तो कुछ उसी अंदाज में आज बल्लेबाजी करने भी उतरे थे। फिर भी सामने मोहम्मद सिराज का किशोर वादा, क्या मंच चुना आपने आईपीएल के शानदार करियर की सबसे तेज 50 बनाने का। क्रॉस गए थे, फॉलो किया स्टंप्स को अरशद खान ने, जो इंजरी टाइम आउट के बाद आए। 280 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत की रबाडा वर्सेस विराट कोहली। इस पूरे सीजन में जो आजादी दिखी है, जो एक एक्स्ट्रा गियर है, वही कहना कि जमाना बदल रहा है और कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है विराट कोहली। देखिए 91 पे 4 थे, तो वहां पे कंट्रोल दिखाना था आज की मैच में। शुरू में तेज खेले, डोमिनेट किया, लेग साइड का खेल, पुल फ्लिक सब दिखा, उसके बाद जब विकेटें गिरी तो एक छोर पकड़ के खेले। यहाँ पे 4 मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, नहीं बहुत फाइन फील्डर रखा हुआ है, बहुत फाइन फील्डर है। शुरू में डोमिनेट किया, पुल किया, फ्लिक किया, बाल जब विकेटें गिरी तो एक छोर पकड़ के वो प्रॉपर विराट कोहली पारी खेली आज के मैच में। क्यों ना एक सीजन जहां बातचीत की है इस डोमिनेशन की, उसे एक बड़े हिट के साथ खत्म किया जाए। कंट्रोल दिखाया, लेकिन अब एक हिट दूर है, क्या वो फैसला लेंगे? सबके फोन इस पल को कैद करने के लिए, जनता बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि एक छक्के की बात है और सेलिब्रेशंस विल बी इन ऑर्डर। बाउंड्री से संतुष्ट रहिए, स्कोर्स आर लेवल। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पे 18 नंबर की जर्सी से लगेगी इस सीजन की मोहर। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वो लेग साइड को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया, वो कलाइयों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिला। और यहाँ भी वो ऑफ स्टंप के बाहर एंगल अक्रॉस होती गेंद, लेकिन बहुत कलाइयों में हमने वो छक्के भी देखे, चौके भी देखे, और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप और उसको आराम से भेजा। ऑलराइट, हियर वी गो। इस मैदान पे परचम लहराया था पिछले सीजन, तब फील्ड में थे, तब आंसू बह चुके थे। विराट के बैट से विरासत पे मोहर, तख्त भी इनका, वक्त भी इनका। कभी ट्रॉफी पे गुमनामी थी, आज आरसीबी की मनमानी है। डिफेंड करने आए थे, डोमिनेट करके जाएंगे सिफर से शिखर तक, चैलेंजर से 2 टाइम्स चैंपियंस तक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने टाइटल को डिफेंड किया है और अपनी विरासत को एक्सटेंड किया है। बेंगलुरु से बोस्टन एक ही नारा, इस साल कप नो नमदे, इस साल भी कप हमारा है। विराट कोहली चेज मास्टर, नाबाद गए, विनिंग हिट मार के गए, छक्का मारने के बाद वो मैच जीता है 2 बार बैक टू बैक। चैंपियन बनी आरसीबी, सेम मैदान, पिछली बार पंजाब था, इस बार गुजरात टाइटंस थी। टाटा
IPL 2026 के चैंपियंस हैं RCB। विराट कोहली हाथ मिलाओ, इज्जत से पेश आओ। ये किंग कोहली एक चेस मास्टर है। 9 IPL शतक, 9000 रन, बंदा खड़ा है तो जीत दिला के जाएगा। उसका नाम है विराट कोहली। यहाँ भी बड़ा मैच, फाइनल्स मैच, और बना दिया कितना, 75 नाबाद, गेंदें खेली है 42। क्या बेहतरीन पारी के लिए अपनी टीम के लिए। एक समय जब विकेटों का सिलसिला हुआ था शुरू, तो वहां लग रहा था कि क्या होगा अब इस मुकाबले का, क्या एक ट्विस्ट है। लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं, क्योंकि ये जो बंदा है इसको पता है मैचेस कैसे खत्म करना है, चाहे वो भारत के लिए हो या अपनी IPL फ्रेंचाइज के लिए। और यहाँ भी चोटिल भी हुए बीच में, लेकिन अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम को लेके गए लाइन के उस पार। 18 सालों की भूख एक ट्रॉफी से कहां मिटनी थी। अब एक नहीं 2 है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और रजत पाटीदार। एक एलीट क्लब, सिर्फ 3 कप्तान जिन्होंने अपनी टीम के साथ डिफेंड किया है टाइटल को। रजत के हाथ को स्वर्ण आया था पिछले सीजन, किसे पता था एक स्वर्णिम दौर की शुरुआत होगी, क्योंकि 18 सालों तक सिर्फ दौड़ में थे। और अब सभी टीम्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दौर में है। चैंपियंस 2025 में, चैंपियंस 2026 में। एक बार जब जीते आप चैंपियन कहलाते हैं, लेकिन दूसरी ट्रॉफी के साथ शुरुआत होती है विरासत की, आपके डोमिनेशन की। और इस डोमिनेशन के कई हीरोज हैं, टॉप से बॉटम तक। विराट कोहली, रजत पाटीदार, वेदांत पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, ये नाम बढ़ते जाएंगे। जोड़ते रहिए गेंदबाजों को। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड तो है, जोड़ दीजिए रसिकदार को, जोड़ दीजिए सूरज को, जोड़ दीजिए कुणाल को। लगातार 2 IPL टाइटल। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, ये 2 नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिए जाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ वो एक पहला टाइटल नहीं, उसके बाद जिस तरीके से इस प्रतियोगिता को डोमिनेट किया है और उस तरफ कदम बढ़ा दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। रजत पाटीदार अमृत जल औषधि है RCB के लिए। जब से पहुंचे 2 बार बैक टू बैक चैंपियन कराई अपनी टीम को। क्रिकेट का अपना थिएटर ऑफ ड्रीम्स है मैदान, सपनों का रंगमंच है। यहीं पे एक सपना जो सजोया था उसे पूरा किया था 2022 में गुजरात टाइटंस ने। गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने 5 सालों के इतिहास में। 3 फाइनल्स में पहुंचे, लेकिन ये टीम जिन्होंने कई सालों तक ठोकरें खाई, लगे रहे, डटे रहे, टीम्स बदलती रही, लेकिन अपनी कोशिश लेके उतरते रहे। दिनेश कार्तिक बतौर खिलाड़ी नहीं, लेकिन बतौर कोच, बतौर मेंटोर, अब 2 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ चैंपियन बने। यश दया नहीं, कौन करेगा गेंदबाजी। रसिकदार ने 19 विकेटों के साथ रिस्पॉन्ड किया। कृणाल पंड्या 5 IPL टाइटल जीत चुके हैं, 3 मुंबई के साथ, 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। जॉश हेजलवुड कभी कोई फाइनल हारे ही नहीं है। अब 6 T20s में 4 50 ओवर फॉर्मेट में ये चैंपियंस की महफिल है। स्टार्ट से लेके फिनिश तक भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इतनी स्मूथ सेलिंग रही है इस पूरी प्रतियोगिता में। एक बार जीते तुक्का बोल सकते हो, दूसरी बार ये मेहनत है, विराट कोहली की मेहनत है। नाबाद गए, 75 नाबाद, 42 गेंदें खेली, विनिंग हिट मार के गए विराट कोहली इस मैच में। वेंकटेश के 32, कोहली के 75 नाबाद, पडिक्कल जल्दी आउट हुए, पाटीदार भी आउट हुए। डेविड ने बनाया 24, पर जो जीत का सहरा है वो गेंदबाजों के सर बनेगा। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, रशीद सलाम, और वहां पे कुणाल पांड्या। बहुत उम्दा बॉलिंग टीम। 2 बार ऐसा हुआ है कि गेंदबाजों ने टाइटल जितवाया है, चाहे पिछली बार की IPL फाइनल्स की बात करो, चाहे इस बार।
डोमिनेशन आती है पूर्णता से, कंप्लीशन। मॉडर्न डे T20 जहां आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चाहिए, बल्लेबाजी में डेप्थ चाहिए, लेकिन गेंदबाजी में टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट चलेंगे। और वो चले गुजरात टाइटंस के लिए भी प्रयास मोहम्मद सिराज का रबाडा महंगे साबित हुए, लेकिन पर्पल कैप उनके सर सजेगी। जेसन होल्डर एक बहुत अच्छा एडिशन गुजरात टाइटंस के लिए। राशिद खान ने भी 2 विकेटें अपने नाम की इस फाइनल की शाम, लेकिन रन्स बोर्ड पे बहुत नहीं थे। ये गुजरात टाइटंस जो एक क्विक टर्न अराउंड के बाद कल शाम को पहुंचे अहमदाबाद में, उतरे मुकाबले में, लेकिन टॉप ऑर्डर पे जो थोड़ा ज्यादा निर्भर किया और उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया पूरी प्रतियोगिता में। लेकिन आज तैयार थी आरसीबी पहले अपनी गेंद के साथ। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार के वो ओपनिंग स्पेल्स, कृणाल पंड्या ने स्टंप कराया जॉस बटलर को, 3 विकेटें राशिद डाल की, और फिर 156 का ये लक्ष्य जो 18वें ओवर की आखिरी गेंद पे 18 नंबर की जर्सी के बैट से आया। पिछले साल इमोशंस की कहानी थोड़ी अलग थी, और वो जो शायद पीक इमोशंस थे वो फिर से महसूस ना करें, क्योंकि आरसीबी चाहेगी कि ये आदत बन जाए, और उसका ये बड़ा कदम रखा है रजत पाटीदार इस एलीट लिस्ट में। पैंथियन ऑफ ग्रेट्स, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, 2 सबसे सफल कप्तान, और अब रजत पाटीदार जिन्होंने आरसीबी के साथ 2 बैक-टू-बैक टाइटल जीते। It's like having kids, right? You can't pick similar with IPL trophies because everything is so hard, and I'm so glad and grateful that in 11 years to have 5 trophies, it's pretty special for me. 17 years RCB waited, and then 2 and 2. What tell us about the transformation? Not just last year, but playing front runners this year. I mean, obviously, a lot of credit goes to the support staff, right? Mohammed, Andy Flower, Dinesh Karthik, Malolan, Obi. I mean, the way they prepared before the auction also last year, and the way they set the team, right? The balance of it. So, again, I mean, sometimes half of the battle you won in the auction. I guess they did a pretty good job. And then eventually it was on us to go out and deliver. And yeah, I mean, glad that we were able to, have the hold on the trophy back to back. Well done. I'm sure the party will be long and joyous. Yeah, definitely. Again, this 18 years of waiting and having 2 back-to-back trophies. This is for the RCB fans. Wherever we have gone, they have supported us. And obviously for Virat as well, pretty special, right? After 18 and 19th season, having 2 back-to-back trophies. So yeah, it's amazing. Well done. Thank you very much, Kunal Pandya, and celebrate. Fantastic once again in the final. Thank you so much. Right, let's go to Aaron Finch. He's got the big man with him. Virat Kohli, congratulations, back-to-back titles. You just said here, how was it different this year compared to last year? Well, I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We topped the table. There's a reason why we got here first. And we just said one thing: if we stick to our cricket, if we execute our plans, we are the best team in the comp. And there's a reason why we've done well so far in the group stage. We ended up topping the league stage, and yeah, just the skill sets we have, the maturity, the composure of the guys just showed through again tonight, and it was a clinical performance. Right throughout the tournament, was there absolutely any doubt that you wouldn't be in this position come this time of the season? Well, to be fair, after the break we had a couple of losses. One loss, and then we had a close win against MI. I'd say that week for us was a bit tricky because we wanted to finish top. But as soon as we got that win against MI, the belief kicked back in. Then we had a comprehensive win against KKR, and then just ended up topping the table and just on our way to the finals. Give us a couple of words about this group, what it means to you, what it means to your family, to everyone involved. Oh, it's amazing. I mean, we've had to wait for so long, and then just to have a group of guys where you feel like you're stepping onto the ground. You don't need to be the one to step up every time. There's guys behind you, around you, who can win games of cricket for you. We have so many man of the match awards spread throughout the group as well. I mean, you look at world-class bowling like Hawk, Bhuv, Duff. I mean, Kunal Pandya, you can bank on him as good as ever. Rashid was brilliant this season. All the batsmen chipped in as well. So I feel so happy to play in a group where we have balance, we have strength, and we are an all-round
strong team, and yeah, so that's why we have the confidence we have on the field right now. Congratulations, mate. Back-to-back champion. Harsh, who have you got? Thank you, Vinci. जितेश राव कसं वाटतंय? खूप आनंद वाटतंय. दुसऱ्यांदा जिंकलोय आणि मराठी बोलता इथे IPL मध्ये ते मला छान वाटतं. इस साल फर्क क्या पड़ा कि पिछले साल तो आप जीते थे, बहुत उत्साह था कि पहली बार जीते. इस साल क्या माहौल था? जैसे मो ने पहले ही कहा था कि वी आर नॉट डिफेंडिंग, वी आर अटैकिंग दिस ट्रॉफी, वी आर चेजिंग समथिंग. उसके वजह से ना हमारा माइंडसेट चेंज हुआ कि वी आर ट्राइंग टू डोमिनेट मोर, वी आर नॉट डिफेंसिव और वी आर थिंकिंग टू डिफेंड अवर ट्रॉफी लाइक दैट. एक चीज मैंने देखी कि अगर कोई प्लेयर इंजर हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट तैयार था. अगर किसी का फॉर्म 4-5 मैच के लिए नहीं है तो भी उनको रखा गया. तो ये माहौल बहुत ही खूबसूरत रहा होगा. आई थिंक सब कुछ क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को कि जिस तरीके से उन्होंने हमको नरिश किया है, सराउंडिंग दी है. जैसे मैं अभी अपकमिंग हूँ, अपकमिंग तो नहीं हूँ, मैं 32 साल का हूँ, पर डीके अन्ना ने मुझे जैसे संभाला है, उन्होंने जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, आई थिंक वो एक आपको आइडेंटिटी देता है कि टीम में कि अच्छे लोगों की कदर है, नॉट यू आर बिग प्लेयर और समथिंग लाइक. इफ यू आर गुड ह्यूमन, यू कैन गिव समथिंग टू द टीम, दे विल गिव यू वैल्यू. मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस बार RCB टॉप सीड्स थे. पिछले साल एक एक्साइटमेंट था, एक डिस्कवरी थी. इस साल टॉप सीड्स थे आप. बोल सकते हैं. वी ऑल्सो नो दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग थे. हमें भी पता था हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट कह सकते हैं कि हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे एक गेम एट ए टाइम, उसकी टैक्टिक्स, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करें. बस एक मैच जैसे फोकस करते रहे कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम कितना अच्छा खेल रहे हैं, कोई और टीम. हमने सब फोकस हम पे रखा और हमारे टैक्टिक्स पे रखा. बहुत खूब एंजॉय करें. 2 टाइटल हो गए, बहुत बड़ी बात है. हाँ, पक्का अगले साल तीसरा भी आ सकता है सर. एंजॉय करा. थैंक यू. नक्की सर, थैंक यू. Right, let's go to Vinci. I'm back with a couple of absolute champions. You're both 3-time winners now. You're still yet to lose a T20 final. How does that compare? That's right up there. I think obviously a little bit more relaxed within the group this year. Sort of got the monkey off the back last year in terms of a long wait for that first win, but I think the group just felt calm and composed throughout the whole tournament, really. Someone stepped up when they needed to be. I think we had, again, like 10 men in the matches, so amazing depth in the squad. Anyone who came in did a great job, and bowled Booby's pretty special. Yeah, give us a couple of words about the great man. I can't remember a game where he went for over 35 runs. In this day and age, it's unbelievable. And it took themselves, I think the rest of us, we could relax and we're bowling another 4 or 5 in the power play, so it's pretty nice. And Booby, you finished second in the purple. I'm sure you'll take a title any day over that. Yes, of course. I mean, how big is, most big was, I would trade any day with that. But yes, I mean, individually, season went well for me. There was planning, there were, a lot of things before the season, and Talk us through what it's like to turn up to a game with this confidence that you really feel you can perform near your best. Generally, that's good enough to beat any opposition in the world. yeah, I think if you take always confidence is up, and I think coming into a big game like that, if you have performed well in the past, it always helps. But I think credit goes to each and everyone. If he did well, if he did do well, I was there. If I did do well, Rashid was there. So I think we all had each other's back, and that's what you need in a big game like that. Just a couple of words about what this franchise means to you, to both of you, and also the backroom staff as well, who go and notice all the time. Yeah, I think the franchise being put together beautifully. Not just the players, I think the support staff. Again, it's a nice, relaxed atmosphere to play your best, try and play your best cricket in and perform. Everyone just seems to have a good time in this group. I think it's hard to build that culture so quickly when the team changes quite a bit every 3 years, but it feels like we've got that now. Obviously, winning helps, but it just feels like the team's quite a tight unit, and we're playing with someone else other than ourselves all the time. So it's a nice feeling. What are the thoughts on a three-peat? Three-peat? Yeah, I can't see why not. Yeah, absolutely. Harsha, I think you've got Devdutt Padikkal. Right, Devdutt Padikkal alongside me played such a big part in giving those starts. It's been a revelation watching you. I've seen you for so many years, but the freedom this year. Tell us about your campaign batting the way you did this year. Yeah, it's been incredible. The entire group just batting with these guys has been really, really special. When you have such quality around you, I think it
throughout the season. The plans that they execute day in day out is incredible to see. I've been in a few meetings. I see how meticulously they plan, and when they go out there, they go and follow it to the T. So having that kind of professionalism is great to have, and that's what put us in good stead. And how is it? Very congratulations. One more trophy in your bag. कैसा लग रहा है? Because मैंने जब आपको पहली बार देखा था कुणाल, आप छोटे से थे, अभी आप बहुत बड़े हो गए. ट्रॉफी और कबर्ड का वो जो साइज है, वो भी बड़ा हो गया है. फील कैसा है भाई? बहुत बढ़िया फीलिंग है इरफान भाई. अगेन मैंने हमेशा क्रिकेट ऐसे ही खेला है जहाँ पे मेरा हमेशा गोल वही रहता था कि आई वांट टू विन टूर्नामेंट्स, आई वांट टू विन ट्रॉफीज, बिकॉज़ वो सबसे बेस्ट फीलिंग है. ऑब्वियसली आपको बहुत खुशी मिलती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख के मैच जिता के, बट वो जब आप ट्रॉफी जीतते हो, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. सो आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड विनिंग ट्रॉफीज एंड God's been kind. 11 years. This is my 5th IPL trophy, and yeah, just very happy. More than the skill, skills से ज़्यादा आपकी जो काबिलियत है लड़ाई करने की, जो जज्बा है, aggression वाला, वो क्या आपकी सबसे बड़ी ताकत? बिल्कुल इरफान भाई. I mean, obviously बहुत सारी चीजें जिंदगी से भी सीखे. तो I make sure that how I can apply and how कैसे मैं गेम में बना रहा हूँ, कैसे मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, कैसे मैं टीम को हेल्प कर सकूँ. So I agree. वो एटीट्यूड बिल्ड अप किया है कि I don't want to give up, I want to be there. So अभी तक वो हेल्प किया है. एक वक्त तक RCB मोबाईल से ना उधर